roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Yo, what's up guys, what's up? ये हालचाल है लोगों यो कैसे हो तुम what's up buddies, what's up? Just began. ऐसा है उनको हमारे फेस कैम शायद यो अटक चुके हैं हाँ अब सही हो गया Yo Ekari, welcome to Livestream and Nila, welcome to Livestream too. What's up buddies? Welcome, hello, welcome. What's up? क्या हालचाल है तुम लोगों Off the ground and tap your feet. Look, stars are near when you feel the beat. We're bound for a greater height. Take a leap into the place. Don't lose yourself in the day-to-day. Join my dream, it is the right time. Leave it all behind. Get ready now. Sing along. Welcome to my world. You know summertime.
We face the darkness and our trials are yet untold. Through the shadows of despair, oh, in silence hopes we share. Whoa, whoa, to chase our dreams that we've declared. We glimpse through, yet fools blind our sight can make. And now, They say let the show begin. we'll find our way. Unending dream. I will cut down any threat in your way. Unending dream. गेम लैग क्यों कर रहा है? What the fuck? नहीं करना चाहिए लैग. अब सही हो. हो गया तेरा. टूट गया पत्थर. पत्थर तोड़ने के लिए मुझे बुला रहे हो. और कुछ काम नहीं है मुझे. नहीं और कुछ काम नहीं. यही करता रहूँगा. चलो कातिया के लिए फार्मिंग करने के लिए तो उसके लिए फार्म करेंगे. अरे डबल ड्रॉप आया. डैम. अब मजा आएगा ना. अब मजा आएगा बेड़ो. कहाँ गए वीकली चैलेंज? ये रहा. कहाँ गए फेयरलेस? ये रही फेयरलेस एंड फर्स्ट ट्रैवल.
Faster. Let's go. Variable elimination. Complete overhaul. Disruption. All shall Now it is be done. क्रिट रेट का मिला मुझे क्रिट रेट का नहीं चाहिए उसको रिस्टार्ट क्लैरिटी आएगी तभी निकालने की ट्राई करेंगे लेट्स सी देखो गारंटेड तो है ये तो पक्का है कि निकलेगी अब कब निकलेगी ये ठीक नहीं क्योंकि पुल्स नहीं बचे और पुल्स मुझे चाहिए अभी डिलीवरी चाहिए अभी जस्ट तो मुझे कार्लोटा को ऐसा निकालूंगा आई डोंट नो कार्लोटा नेक्स्ट कब आएगी तो मुझे कार्लोटा को ऐसा निकालना जाने से पहले तो वही We don't start. Healing bonus. Let's see. And last one. Last one. Faster. Let's go 74 inner level. बहुत जल्दी 80 भी हो जाएगा सही हो
पूरा शॉर्ट मटेरियल ही सिर्फ चाहिए। कार्डिया का पूरा पता नहीं चला है, नया पता क्या नहीं चला, नए पीसेस ही आएंगे। अभी शॉर्ट मटेरियल ही फार्म कर लेता हूँ। कार्लोटा के लिए भी एक्चुअली गन के लिए मटेरियल फार्म करना था, बट आई थिंक सो है उसके लिए इनफ है, हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो कल को कर लूँगा, कल को भी डबल ड्रॉप आएगा तो कर लूँगा, इजीली हो जाएगा। अगर निकल गया अभी निकली तो पेटी तो हाई है, लेट्स सी, निकल तो जानी चाहिए। कार्लोटा ले लीजिए। कमेंट क्या होता है, मैं कुछ भी लूँगा, क्या दिक्कत है गेम? ओह सर from the heart. Oh. चलो कार्डिया के लिए हो गया, तो हुआ नहीं, ऑफ कोर्स हुआ नहीं, शॉर्ट मटेरियल हुआ नहीं पूरा हुआ, बट धीरे धीरे करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली मुझे फार्म करना है कार्लोटा के लिए, तो कार्लोटा के लिए फार्म का करना है, कार्लोटा के लिए निकालना है जैसे वेपन, तो और 3 बार करना है, हो जाएगा। फिल्म और नहीं करना चाहता, हो गया है जितना करना था मुझे, बस 40 एस्ट्रेस मिलेंगे, मुझे नहीं चाहिए और वो हो नहीं रहा। और Ciaccona की स्टोरी आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, बाकी सब तो डन ही है, बाकी सबका तो डन सीन है। काम करते हैं, ऐसी फील्ड में चलते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा काम करते हैं। तो रोवर के लिए अच्छे पीसेस नहीं मिले मुझे, दोबारा रोवर करना Astro modulation. Frozen blockade. My compliments. You will yield. And is that it? Victory
Found your weak spot. Can keep up. Quickly and swiftly. अब चलते हैं 1000 गेट्स पे। इस बार कौन है? फ्यूजन टीम है इस बार। Another day, another heroic. Make this quick. I have experiments underway. Watch out. Fury boil. Faster. Stay calm. And roar with time.
हाँ Watch out. Export. कहाँ भाग गया भाई? Variable elimination. Let's go. Liberation damage बढ़ चुका है. Memory of rest. Great damage का buff. Then यहाँ से ले लेंगे हम लोग Liberation damage. इन और कुछ नहीं ले सकते. चलो. कोई बात नहीं. चलो. आजा. क्या बात है? मैं फिर से दे देंगे. कर ही नहीं पाया वो अपना बैच. Confined to the limits. ट्रीट इंग्लिश करते हैं ताकि आओ को दिक्कत नहीं. बस ट्रीट तो करता है, कोई दिक्कत नहीं है. Faster. Complete overhaul. Fury boils. Variable elimination. Conditions up. Yo AJ, welcome to Livestream. I'll tell you. Pierce through the Pseudo stars. Faster. Huh. Export. Silence. Variable elimination. वीसी में है क्या? वीसी में अपने वीसी में अपने वाले हैं. आना है क्या वीसी में? बोलो. वीसी में आना है तो आ जाओ तुम. और कुछ रहेगा? कुछ विल्ला बुल्ला कुछ है ऊपर नीचे? नहीं है. आना है तो बोल. Watch out. अरे अपने हेल्थ का बफ ले लेना ना बंदा. कुछ तो हेल्थ का बफ ले लेना. कोई दिक्कत नहीं. आना है तो बता. Burn to ashes. बीवी के सामने आना है बता. आ जाता है. मर गया. मोटा ही मर गया. Confined to the limit.
ओके हम 35 के मार रही है मेरी किसी को इंटरेस्ट ड्यूरेशन बढ़ा के क्या ही करेंगे modulation आजा आजा तो बीच में नहीं है बीबी के बीच में है जाता हूँ अभी आता हूँ बस ये कर लूँ आता from the heart. Fury boil. Turn to ashes. Let's do variable elimination there. Combine this. कुछ तो गंदा से हेल्प ले लिया भाई मैंने ये डिफीटिंग वाला नहीं लेना चाहिए बेसिक अटैक वाला लेटा बेसिक अटैक से बढ़ गया Watch out. हाँ एक सेकंड हाँ चाहिए सॉस में आया सॉस में तो आते हैं वही सॉस डाल दे अगर हो गया लाइन तो अच्छी बात है चैनल Watch out.
HP नहीं जाएगी। होंगे सारे लोग हेल्थ का वापस हेल्थ तो जाएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसा वाला ले लिया तो। चल लैपटॉप है मेरा, कुछ नहीं। Faster. एक सेकंड रुक, पहले से एक सेकंड रुक, तो ये स्टार्ट रुक। Leave it to me. In war with Let's time. go और क्या? Wow, from the soul. Astro modulation. Fury foil. Chill, man. Variable elimination. Pierce through the stars. Run. हाँ फ्यूजन के लिए ठाना ही है, फ्यूजन डीपीएस नहीं मेरे पास, क्या करते हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट हो गया। लेट्स गो। जो मेन पे रह के डैमेज करेगा वो डीपीएस होता है। यहाँ से वेस्ट वेस्ट मिल गए, बस वेपन मिल जाएगा यार, कार्लो टागा मजा आ जाएगा। हाँ क्या हुआ? स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं। कहाँ पे
सही है। नहीं, अरे मैं पूछा था बीवी कहाँ पे। अरे युजुमी कर ये मिल गई, रेडन मिल गई। अभी भी कर सकता है तो अपग्रेडेशन। एक सेकंड, अरे देख देख देख, अरे देख स्टार्टिंग है ना उसका। हाँ तो एनिमो ट्रैवलर सही रहेगा उसके लिए यूज करने के लिए स्टार्टिंग में, जब उसके डीपीएस आएंगे तब यूज करना चाहिए। हाँ काया की बात कर रहे हैं। वही बोल रहा हूँ, एनिमो ट्रैवलर का अपग्रेड कर ताकि इजी हो रहा। हाँ हाँ ट्रैवलर का ये देखो देखो एनिमो जो होता है ज़्यादा डैमेज नहीं रहता, बट स्टार्टिंग में सही रहता है यूज़ करना। बाद में पायरो ट्रैवलर ही है जो डैमेज करता है और अच्छा के बाद। अरे वही मेन कैरेक्टर जो है उसी की बात कर रहा हूँ, उसको बिल्ड करने के लिए। तब हाँ हाँ मर्ज हो रहा है, जैसे बाई चांस पायरो का इफेक्ट है उसके लिए एनिमो मर्ज हो जाता है। हाँ हाँ वही ना बेनेट यूज करेगा उसके साथ बहुत तगड़ा डैमेज करेगा तुम्हारा तेरा ये। अरे बेनेट है इसके पास, नहीं होगा ना बेनेट, नहीं होगा ना इसके पास। हाँ ये भी है। अरे सुन मेरी बात सुन अभी सुन। देखो जितने फुल मिल रहे हैं ना, वे काम कर तो इस पे फुल मार। अभी क्रॉनिकल पर चांस नहीं रहता, बट फिर भी ट्राई करके तेरा लक अगर चल जाए, बिगनेस लक काजो निकल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ कर सकता है। चिंचू सैंगलिंग एंड बेनेट के साथ यूज कर सकता है। वो तीनों किसी को भी हैंडल कर सकते हैं, कि कोई भी टीम को हैंडल कर सकते हैं वो तीनों सपोर्ट। वही ना, पीटी सेव नहीं होता। वो कुक करना पड़ेगा तुझे। नहीं निकला 69।
अबे यार 69 की पिटी होगी, कार्लोटा वेपन नहीं निकालना। क्या? हाँ देखा मैंने, चांगली निकल गया, उसकी 4 की पिटी में निकला। वही ना। नहीं मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, बाहर रात को आऊँगा मैं अगर होता है। डबल ड्रॉप हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी डन सब। बस विम्परिंग वॉइस रीसेट होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 69 की पेटी हो चुकी है, कैरेक्टर में वेपन बने थे बस। अरे 50 का आर्टिकल निकल जाएगी, बस वेपन निकालने का होता है हो जाएगा। हाँ अरे राइडन कल मिल गई मुझे, पता है कल मिल गई मुझे राइडन, कल मिले मुझे ना। हाँ कल मिला। हाँ Welcome to Rosemary's Apothecary. Your perfect potion awaits. बिल्कुल। और ये इवेंट और नहीं होगा भाई, दिमाग की दही हो चुकी है इवेंट करते करते। बस 40 एस्ट्रेस मिलेंगे और नहीं चाहिए ब्रांड। हाँ हाँ रिमोजन सेव कर और निकाल देना। हाँ वही 4 वाला चीज। बचा करो, नेट का दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बॉट्स भाई स्टोर डिले है भाई, बहुत टाइम के बाद आ रहा है। क्या है ये 97 92 82 क्या? वो डिपेंड करता है तुम कितना ये कर सकते हो, कर सकते हो। नहीं मेरा एक्चुअली सच बोलूँ तो मेरा अगले साल ही स्टार्ट हुआ, अगले साल से फ्लावर, और अभी 47 है मेरा ये यार 47। और दिक्कत ये है मेरे पास नहीं था, मेरे पास सोर्स नहीं था खेलने के लिए, ना मोबाइल अच्छा था कुछ था। उबा और वो एक साथ ही स्टार्ट हुए थे उस टाइम। वही उबा पूरा ट्रैक पे आ चुका है, अब गिनसिन थोड़ा बाकी है, वो आ जाएगा ट्रैक। मैं याद नहीं है, बाद में दे दूँगा। ये मैंने किया नहीं था, ये कर ले। दिक्कत है कि अगर यहाँ पे नहीं, इसको नहीं निकालना निकालना। इस साल नहीं देखा मैंने। आज फाइनल है ना। और भी
भी कहीं तो पड़े हुए होंगे या नीचे ऊपर कहीं तो पड़े होंगे, लगता तो है नीचे है। होना तो चाहिए, इतने इतने से हो जाएगा क्या? आई थिंक तो होगा या दिमाग में अगर मैं यहाँ पे लगा तो यहाँ पे इसको निकालते हैं, इसको फेंकते हैं, नहीं इसको निकालते हैं। इसको अभी साइड रखते हैं। इसकी तरह एक और पीस चाहिए होगा अगर मुझे यहाँ पे लगाना हो तो। वही इतने ही मिले पीसेस मुझे, आई थिंक तो एक आसपास कहीं और पीसेस है। ये नहीं, ये भी नहीं, ट्राई मार के देखते हैं। मैंने इसे यहाँ फेंक दिया। एक बच रहा है। Craftsmanship. A wise investment. Yeah. Can you quickly and swiftly? Running won't stay behind. Shackles be gone. Dang, sorry. My compliments. Brilliant lights away. Flashed away. चलो स्विच करते हैं एंग्लिया की टीम पे और मूवी का करते हैं क्लोज। क्या आप चलते हैं सीधा सीधा स्टोर पे। म्यूजिक को करते हैं ऑफ, नहीं मैं कहाँ गया, सॉन्ग को करते हैं ऑफ, देन असिस्टेंट अभी थोड़ा जाओ और लें गेम का साउंड बढ़ाते हैं, म्यूजिक ऑन, गेम का साउंड थोड़ा और इंक्रीज, काफी है। गेम कुछ ज्यादा अटक रहा है, चलो Faster. जाओ। लेट कट कट अब चलते हैं स्टोरी पे। लेट्स ट्रैक, लेट्स प्रोसीड एंड नाउ कहाँ पे चलना Like the wind. यहीं पे आना है बट 8 बजे यहीं भी मिलेगी हमें। Faster. ऑलराइट वह कर लेते हैं फिर। 8 बजे 8 बजे वेट इसको and done.
चल hello, I think I'm back. चलो सही है. चलो OBS क्रैश हो गया. चलो सब कुछ सही से आ रहा है. चलो ऑनलाइन What the hell यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? What the Order's acolytes found while clearing the abandoned Secret library? musician. A manuscript of a poem with an accompanying music sheet. The public has already caught wind of its contents. Did you know it was signed as Golden Anthem? They say it was the last ये word क्या कर रहे हैं यहाँ written पे? aboard the Pilgrim's sail. I reckon the original finder fished it out the sea and put it in the library, not knowing what it was. Shh, quiet. They're They're criminals. criminals. Best not mention them in public. Whoa, okay. Golden Atom criminals हैं? Carlotta? Shh. That name is not to be spoken of in Raguna. Okay. Simply put, the Golden Anthem was once a renowned poets' society. Their 3 members were once the Sentinel's cantors, but the Order banished them for insulting the divinity. Allegedly, their pilgrim sail caught fire and none on board survived, and thus their last known work disappeared. Well, since the manuscript is no longer secret, how does the tune sound? Give me a second. Let me think. Okay. Hear that? It's exactly what What? they're playing now. ये एको को कंट्रोल कर सकता है? What? ये भी एको को कंट्रोल कर सकता है? What happened? मैं वही सोच रहा हूँ. Well, it would appear they were possessed by demons, just as this very article Yeah. suggests. ये बहुत मुसीबत करने वाला है भाई हमारी. बहुत प्रॉब्लम करेगा ये. It's you again. Friends, it's been too long. I gather you were Christopher. also listening in on that conversation about the Golden Anthem's last work. What did you mean by daemons? वही. Resentful of the Order's verdict, they committed to paper a curse upon Rinasita and Raguna. Those favored by the divinity were the most willing to raise the blade of rebellion, for they alone knew how to make divinity bleed and doctrines crumble. Though they died in exile to a great fire, their resentment festered in their music and poetry, transforming into horrors known as demons. Like the fire that dragged them to hell, these demons will spread throughout the land and burn all of Raguna. Okay. Yeah, Tomato Eye. Welcome back. Welcome to Livestream. Come back. Sorry. This article was recently published in the Raguna Literary Journal. Quite the perspective, wouldn't you say? Vengeance born of resentment. Such dark and twisted characters are hard to resist. Perhaps someone unwittingly played that tune just now and opened the plushies to possession by the demons.
Then again, it's all conjecture. Those in the Poets Society died years ago, and who's to say what really happened? वो कुछ years पहले जा चुके हैं. Okay. Now, if those vengeful spirits really do exist, well, out of all the patrons here, they went straight for you, Rover. Curious and curiouser. curious. By the way, it just so happens that I made a copy of the Poet Society's last work. कौन सी copy? Here, take it. Consider it a little souvenir from your spirited encounter. Maybe it'll prove useful later. Okay. Goodbye, friends. A change of venue is in order. I must finish my play. Play? What? ये बंदा अलग ही सस्पेंस है भाई अपने में. ये हम पे हमला भी कर रहा है, हमें समझा भी रहा है, स्टोरी टेल रही भी है. क्या चाहता है ये? Like the fire that dragged them to hell, these daemons will spread throughout the land and burn all of Raguna. Is that really going to happen? Unverifiable, yes, but not entirely dismissible. That said, a peculiar entity did indeed manifest, and it attacked you. Okay. So, let's start at the very beginning. I have a friend who's an expert in deciphering music. I believe you've met her before. मेरा अकाउंट खोलना थोड़ा सा करना है. आप थोड़ा ये जल्दी आ जाते यार. मैं अब स्टोरी करने को चक्कर में हूँ. स्टोरी कर लेगा. आज अकाउंट डेकोर है ही नहीं. मैं स्टार्टिंग में बोला था कि अकाउंट डेकोर किसी का होगा तो बता दो. कोई था नहीं, तो इसलिए मैंने स्टोरी स्टार्ट कर ली. वेट करना पड़ेगा आपको. फिर खत्म हुआ जल्दी. तो लेट्स सी. She who resembles Topaz should still be near Whisperwind Haven at this hour. Okay. Your summer will never wither. Okay. All right. Okay, ठीक है. कहाँ पे जाना है हमें? Okay, यहाँ पे जाना है. Yeah, follow Carlotta to look for topaz. आ गए हम लोग. In her world, poetry and music hold equal sway. Okay. Here is Ciaccona. Follow the song to find her. Damn. Rover, Carlotta, it's been too long. Yep, it's been too long. You really must adore that song. I remember hearing you sing it when I was little. You know each other as children? When I was a child, whenever I passed by Ciaccona's house, I'd always hear music drifting from the courtyard. Lively, spirited, and so full of emotion. Damn. I remember it well. Those two guards of yours were like giants from Septimont. Easily 200 pounds of pure Spectimon muscle. से. अच्छा. Back then, Ciaccona's family conducted the Order's choir. The orders, okay. Then why is Ciaccona a wandering bird? How should I put it? Well, as they say, families are always rising and falling. Okay. But a song
is a song, whether sung in a grand hall or beneath the open sky. As for family matters, let the past stay where it belongs. Okay. Anyway, the two of you came in such a hurry. I suppose you're not here to take in the music? म्यूजिक सुनने तो नहीं आए थे, कुछ इन्वेस्टिगेट करने आए थे. लेट्स म्यूजिक सुनने में मिला आवाज जरा अच्छा. हाँ. Oh, so you eavesdropped on a man rambling on in C3 sharp, and then poof, out pops a monster. Yeah, वही. अरे नहीं. How sharp is C3? What the fuck? Ciaccona, you are missing the point. Really, yaar. It is the point. I need to know what kind of music could possibly have the power to conjure up those monsters of yours. Okay. The Golden Anthem. That name should never be spoken. They're criminals. To conspire with them is to risk banishment at sea. Or worse. The order of the deep can't harm us one bit. Don't worry. This won't be the first time we've crossed paths with the Order. Fine. From what you've told me, the composers of this poem cursed Rinasita, spelling the fall of Raguna. When the poem is played, some type of horror appears. If I understand correctly, that's what attacked you and Carlotta. Yeah, you are right. If you ask me, this story is a right load of codswallop. I don't believe a simple little poem could curse Rinasita. But हम पे अटैक हुआ था यार. ऐसा कैसे? Then you... We need to get to the heart of this poem and music mystery. Let me join you. I can't resist a good adventure. Okay, Ciaccona. Okay. All right. I'll help you find the link between the music and those daemons. But in return, I want you to hand these pages to me for safekeeping. All right. Sure, no problem. Then we have a deal. Yep, we have a deal. Since you believe this music summons them, how about we test it for ourselves? I've already memorized the sheet music. Huh? It's risky, but there's no surer way to find out. Wouldn't you agree, Rover? Seeing and believing. I am well prepared. I am ready to fight. I am well prepared. Yes. The final work of poets banished to distant seas and condemned to death. What, I wonder, did the verses forged in flames truly sing of? Ciaccona के instrument. भाई ये म्यूजिक यार. और सारे इकोज आ गए. सारे आगे पास में. चलो हो जाए. कहाँ गए? ट्रांसलेटर ये रही Ciaccona. The detectives in Africa. Yeah. Ta-da.
Damn. The poem of finale. स्टार अरे यार खत्म हो गया यार थोड़ा लंबा सुनना था गाना मुझे चलो कोई नहीं नॉर्मल हो गया है लेट्स गो केयरफुल नॉर्मल नहीं हुआ आज हाँ वो वापस जिंदा हो रहा था ना Ciaccona normal कर लिया उन्हें. They burn in despair, resentful of the Order's verdict, till their last breath. Their last work is nothing but a curse upon us all. With our bodies to fuel the fire, the ensuing furnace shall forge Raguna's true gold. Is it saying Raguna will burn to the ground? What? They wanted their resentment to echo through the streets. Just by reading this, I can almost see their terrifying faces in the fire. These voices. They're people of Raguna, aren't they? I think Yeah, I people heard of Mr. Raguna. C3 Sharp in the mix. Whoa, okay. If the poet's resentful souls gave birth to daemons, then Should shouldn't not they sound like the sound poets the poet. themselves? Yeah. Those voices were just people That's who the read point. or heard their work. Perhaps the voices themselves are what causes the daemons to manifest. In the legends, daemons are born of death and curses. But what we've seen isn't like that, no. They're more like horrors created from people's words and imagination. Yeah. Of course, I'm just speculating. The voices were somewhat muddled. Perhaps I can refine the melody. This time we I need need to listen harder. Okay. Let's find out what the true story really is. Let's see the true story. True story of demons. Okay, let's start. This is a realm created from melodies. Okay. Music can transcend space and time to bring memories and stories to life. That music sheet is no ordinary piece of music, is it? No. Normally, you can't perceive the frequencies in a melody. But that manuscript lets you see the world as I do. That part with the daemons should be right here. Yeah. They burn in despair, resentful of the Order's verdict, till their last breath. Their last work is nothing but a curse upon us all. It's the same as what we heard before. Yeah. But now I see something. A balance scale with a crowd of people standing on one of the pans. What are they weighing? The two sides of the scale represent differing perspectives. Once a work is made public, its meaning no longer belongs to its creator alone, but is shaped by the interpretations of its readers. Perhaps it was a simple poem at first, nothing more. But then the article claimed it was a curse upon Raguna. Given that members of the Golden Anthem were banished on the Pilgrim's Sail and died in a fire, the notion quickly took hold. No one knew exactly what happened, so they filled in the gaps with their imaginations. With motive and a complete story. Perhaps that's all it took for a lie to become the truth. Each time someone plays their last work, it summons daemons. This is the Golden Anthem's revenge and curse upon Raguna. But still, words and imagination alone cannot bring something into existence. Unless there is a resonator involved. Yes. Someone must have used them to create the daemons. Yeah. What if the mastermind pulling the strings from the shadows is the author of that article? Daemons are bound to their वही creator, क्रिस्टोफर कर रहा है ना so it might not be a वही coincidence you उसने fall हम पे into हमला the करा है restaurant. वही कर रहा है There could be a connection between you and this mastermind. Or perhaps they have their own reasons for wanting to see you silenced. Will these diamonds affect Raguna?
imagination knows no bounds. If left unchecked, such incidents will only increase. For resonators, dealing with them isn't much of a challenge. But for ordinary folk, it's enough to spark panic across the city. Finding the one pulling the strings should be our priority. Okay. Imagine knows no bonds. If left unchecked, thing could only get worse. Okay. End the current story. Replay story. Regular choice. Regular entire story. Inspiration 1. Okay. How do we catch this mastermind? If the daemons are born from the public's imagination, then things will shift once we catch whoever is responsible for starting this in the first place. Okay. This mastermind has gone to great lengths to twist the facts, stirring fear and turning it into resentment. Maybe an attempt to cover up certain stories about the Poet Society. He must be tied to them somehow. If we can learn more about the Golden Anthem, we might be one step closer to catching him. You realize people's interpretation and imagination of music and poem are what brought these diamonds into being. Okay. End the current story. Music and poetry are born from kindness and hope. Yet now they've been twisted to create these monstrosities. Whoever is behind this won't just sit back and watch. The thought of confronting them is already inspiring me to write a ballad. What should I call it? What instruments would fit? Huh? Our enemy hides in the dark, while we remain in the light. If that's the case, तो फिर क्या करा जाए कालोटा? we need to split up. With your tenacity and Ciaccona's expertise, we will uncover the truth. And Opal? Someone has pointed a gun at Cat's Eye. Someone ought to pull back the curtain and expose them. The family has its ways. Tracing the article's source and finding this mastermind won't be a problem. So where do we start? Where should we begin our investigation? If we find melodies connected to the Poets Society, I can bring the past into clearer focus. Okay. I've got it, Rover! I know a place where they've definitely left their mark. चलते हैं फिर वहाँ पे चलते हैं. Let's go. Let's go. Onward to new melodies. Let's go Ciaccona. हो जाए. Okay, हम डायरेक्टली आ गए क्या? ये रही Ciaccona. It's free to go anywhere without restraint. If only you could carry my poems into the hands. अब मैं लेके भाग जाता हूँ. Ciaccona लेके भाग जाऊँ. चलो भाई. मैं चला भाग जाता हूँ भाई लेके. आई ये. वो स्पेक्ट्रो एरर ओवर डेटा रिसर्च. मैं लेके जा रहा हूँ भाई. मैं लेके भाग रहा. मैं लेके भाग रहा. आई नहीं जा सकते. छोड़ो यार. चलते हैं. वहाँ सामने जाना है हमें. Head to target location with Ciaccona. It's free to go anywhere without restraint. If only you could carry my poems into the hands of everyone across the world. Yeah. Ciaccona की क्या वॉइस है भाई. बहुत प्यारी है.
चलो हम आ चुके हैं. We are here. What is this place? Ta-da! Welcome to Requiem Paradise. Requiem Paradise, okay. This is where Raguna's musicians lay their old instruments to rest. Oh, For the people of Raguna, the sea is everything. We live and sleep by the sea, and our souls drift out to sea when we pass. okay. Yo, it is भाई. Livestream. ये हालचाल. भाई spoiler. भाई तेरी गलती है ना, तुमने स्टोरी नहीं की अभी तक. मैं क्या करूं? भाई spoiler. Since an instrument is an extension of the musician, it's only It's fitting only that it's buried fitting, by yeah. the sea. May its dreams be long and sweet before returning to the waves. Yeah. I'm certain this is where the poets of the Golden Anthem laid their instruments to rest before their banishment. Okay. What's wrong? You seem troubled. No, I am not. Have you found anything leads? Is that what's been on your mind this whole time? Yeah. I say, if the answers aren't coming, let it all go and clear your mind. Okay. Thank you. To be honest, I haven't found any leads either. But worry not. This is what we bards call a bottleneck. Once, I spent 3 days just trying to find the right words to describe a tree. Couldn't do it. Not one word. So, I stood under that tree and prayed for an apple to fall Very on good, my head. Ciaccona. You know, just like in those stories where inspiration strikes after an apple hits you. And, well, at least you get a snack out of it. Yeah. So did an apple hit you? So did inspiration find you? The apples never fell. I stood under that tree until I couldn't any longer. But still no inspiration came. Okay. What? क्या हुआ? Ciaccona? What? Apple? What? Try it. Apple कहाँ से आया? Okay, try करूँगा of course. But It's a real apple. yeah, real apple. Later, when I finally decided to leave, I looked up through the gaps in the branches and suddenly saw a blooming flower atop a cliff. Ah, Turns out, even without an apple, inspiration may yet strike. But if I hadn't stood there, I might have missed that unexpected burst of beauty. So, maybe this is enough. Let's put aside heavy thoughts and continue our walk with a clear mind. okay, Ciaccona. Damn, क्या सीन है यार. भाई स्पॉइलर. भाई क्या सीन है भाई. स्क्रीनशॉट तो बनता है. Question: What it he was thinking of that apple? अरे रियल एप्पल था भाई, रियल एप्पल था, लेजिट. अरे चलना भाई. What? अरे यार. Okay. चलो. So maybe it's enough. Let's put aside heavy thoughts and continue our walk with a clear mind. Okay. I'm starting to understand why Carlotta calls you Topaz. वही ना. Sun late. Of course इसीलिए Is that बोलती है. so? But I'm nowhere near as dazzling as the sun. If anything, I'd rather be like Icarus in the story.
Soaring freely in the sky, even if it means Falling in the in end. the end. भाई क्या प्यारा सीन है यार, क्या प्यारा सीन है. I sense the melody of an instrument close by. Let's search for it. Let's go. एक सेकंड रुको, मैं टीम चेंज कर सकता हूँ ना? Yes. We still have a long journey ahead of us. Let's press on. यहाँ पे आया नहीं था क्या मैं? Investigate. A flute. But it sounds sharp and harsh. If this were a performance, हाँ. I'd say it's trying to finish as quickly as possible, barely giving the Barely notes a giving the chance to notes a breathe. chance to breathe. Okay. ये भी इंस्ट्रूमेंट है ना? हाँ इंस्ट्रूमेंट है लगता है. A harp. A It's harp? in excellent condition, but its tone is flat and dull. Let's keep it for now and see if there are any other instruments nearby. Okay, let's see. I can't even join Discord. अरे हाँ आज नेट का दिक्कत है. कहाँ जाना चाहिए ना? ये है क्या? Is that a lute? Lute, हाँ? Its echoes are faint. Perhaps because it's been abandoned longer than the previous two. I'll need some time to decipher it. Wait. The sound may be weak, but there's an undeniable strength to it. अरे बीबी होगा. बीबी का है, बीबी होना चाहता है बट आज आईपीएल है ना, नेट नहीं चल रहा है. बेचारा रो रहा है कि नहीं आ पा रहा, आना चाहता. आना ही था इन लोगों को. चलो मैंने रोवर ले लिया था, अब यूज करूँगा शायद. Let us show begin. Let's follow. Damn भाई, मैं तो आ रहा है यार सियाकोना के साथ यूज करने के लिए. I believe this lute is exactly what we've been looking for. Sometimes, even when the instruments are the same, the performer's mood can change the entire sound. For example, this lute doesn't seek to boast. It speaks softly, like a traveler sharing a story over tea in the warmth of an afternoon. Yeah. The true purpose of music is to express what words cannot. It centrally has the style of the poet. भाई मैंने आज स्ट्रीमर लग प्रूव कर दिया. वो है ना 4 की बेटी में ये निकल गई. क्या निकली थी? चैंगली, सॉरी. 4 की बेटी में भाई की निकल गई. वही 50-50 में क्या ही बोल सकते. It certainly has the style of a poet. Rover, if there's something you want to say but can't put into words, if you sing it, maybe I'll understand. Okay. But हमने कोई गाया नहीं यार. But I haven't even heard you sing yet. वही ना. Me? Yeah, Perhaps you. another time. Once all this is settled, I'll perform for you. Be sure to listen closely then. Okay. मजा आएगा. Now, it's in the lute's hands. I hope this melody holds a tale worth telling. Let's go. Another story. Realm of melodies. Okay. You are in book. Listen,
I hear something up ahead. Okay. It seems like an interrogation room. This Oh, melody carries the melodies. weight of the Poet Society interrogation. Let's keep moving. Take care Okay. with each step. The melodies left by these instruments are extremely fragile. The realm we're about to enter will appear fragmented. Okay, Ciaccona. Thank you. We may find ourselves straddling vast rifts in time and space. A single misstep could draw us into other melodies, leaving us lost within them. Okay. I understand. Farrell of the Golden Anthem. Know that Imperator is stern, yet Yet merciful. merciful. The Codex teaches us that those whose sins are cleansed by the sea shall remain blessed by the sea. It is a grave offense to slander the Sentinel. This includes your claim your that claim the that Sentinel's true form is a steed of the skies. I was told you found this lie carved on a lithograph. In the face of the tempest, a giant celestial steed carved a path for the Ark. how How absurd. चार मोड़ के पता नहीं. If you admit you were mistaken at tomorrow's trial and reveal where you have hidden the evidence, I will move mountains to protect you protect and you. your companions. Okay. Remember, Imperator only responds to repentance, Not silence. I'm sorry, Sir Acolyte. I'm doing my best to cooperate. Harold. Please don't mistake my silence for defiance. It's just, this room is freezing, and I've caught a chill. Makes it hard to talk. I'm afraid that by the time I see the Sentinel, I will have lost my voice entirely. Perhaps then, they will judge you for silencing a poor transgressor's confession. As long as you repent and help us destroy those blasphemous poems and songs, the Sentinel shall show mercy. Yeah. You are a wise man. I trust you will make the right choice. I look forward to seeing you tomorrow. Good night, Mr. Farrell. I will always be here should you wish to receive the Sentinel's mercy. No need to worry, Sir Acolyte. In fact, I'm beginning to enjoy the cold. Neither official Okay. nor private records show them as having ever repented in the Cathedral of Mercury. हाँ. This melody is fading fast. Let's check if there's anything nearby to amplify it. Okay. Farrell's gone mad. He ought to have hidden the truth in our secret study. Why would he slip this dangerous knowledge into his poems and hand them out to children? We ought to have buried the truth. Buried the truth. What are you thinking? It just occurred to me. Is that our mastermind's true aim? Not only to bury the past, but also to silence those who know the truth. Like you. To that end, he stirs panic to deepen Ragonese prejudice against the Poet Society. Using this opportunity to create monsters born from our words. Words and music are weapons without form. All right, Ciaccona. यहाँ पे भी एक है. Okay. चलो ना. I understand what Farrell was trying to do. We're not adventurers or mighty resonators. We don't even have the time or ability to determine whether that lithograph is real or fake. Okay. Farrell only wanted to share the voice of uncertainty. He hoped someone might understand his doubts. Our fate has been sealed. All we can do now is choose what we believe and carry what we hope to be the truth to our graves. They don't sound like they're full of hatred at all. If anything, they appear to have anticipated what would happen. During the interrogation, they kept their composure and did not offer fierce resistance. In fact,
They even showed sympathy for the interrogator. Everything seems to revolve around the Order. Yeah. Could they be the ultimate mastermind behind this? हो सकता है. We don't know that for certain. But at वही least we पता now नहीं know अभी. the Poets Society would never place a curse on Raguna. All right, Ciaccona. And last one. I knew this was to be our fate. एक सेकंड स्टोरी कर रहा हूँ. From the moment we uncovered that lithograph, I knew it would come to this. Still, I have no regrets. But if the Sentinel's true form is a flying steed, what does that make the Imperator we've pledged our faith to? All this time, we've been living nothing but a lie. What a lie. The Order's stance is that the Poets Society concealed blasphemous works. Yet the Order themselves concealed the lithograph's existence. What were they afraid of? The Poets Society discovered the Sentinel's true form. That's right. You must have seen the Sentinel in the inverted tower. Yeah, मैं गया हूँ, सेंटिनल से मिला हूँ, इन्वर्टेड टावर भी गया हूँ, कार्डिया से मिलने. To keep the Sentinel's true form a secret, the Yeah. Order ruined the Golden Anthem's reputation. Yep, you are right. The melody is fading faster now and becoming unstable. We should leave. We can continue our discussion later. Okay, Ciaccona, चलते हैं यहाँ से. Let's go. What? ये क्या है? Where is this place? A study? Ciaccona, are we? Ciaccona? Ciaccona? Ciaccona कहाँ गई? We must have gotten separated. Ciaccona did say even a slight misstep could draw us into other melodies. Am I? You are to build a home here, like seabirds. Dwell upon the water, just as countless stars dot the night sky. Girl in the study. Okay. I don't know if what I'm feeling is right or wrong. All right. They were clearly the Sentinel's cantors. Why would anyone call them criminals who insulted divinity? मैं स्प्लिट नहीं कर सकता. This is a poem I've never seen before. It's so different from what they used to write. Do not place flowers on my tomb, for I do not rest beneath the stone. Ciaccona है. वो छोटी फॉर्म है उसका. बच्ची है अभी. उसके पास दिखाया जा रहा है. I think so. I am the sea wind at Raguna's walls. I am a dawn that breaks through thorns. I am a nighthawk of wings of flame, soaring towards the celestial steed, whose praises I sing and whose true form I behold. A flame, celestial steed, true form I behold. नहीं, मेरे को स्टोरी वगैरह ऐसे गेम्स फुल स्क्रीन में पसंद है. हाँ, टीवी पसंद. बाकी रीच के लिए सॉस डालता हूँ मैं. ये डालता हूँ हर डोज. बाकी मुझे नहीं. Let's follow her for now. OBS. Okay, we're the here. night sky will be illuminated by wings of flame, and I shall be reborn in immortal poetry. Because they cannot banish the truth, the Order of the Deep instead banished us to the sea. Our thirst for truth is why we were cast out. Yo, Pavan bhai, welcome to Livestream. What's up? No matter what, remember this. The truth will always exist. And the truth is gold that is unafraid of the fiercest of flames. Okay.
हम जा सकते हैं अंदर? The sounds are coming from over there. What is this place? Who are you? Who are you? She's always been distant and aloof, but her true melody is both heavy and fragile. Ciaccona toccata. Ciaccona toccata. Oh, Ciaccona toccata उसका पूरा नाम है. All right. As long as you still draw breath, lift your eyes and look. With this poem, your life is eternal. Damn. Okay. अब कहाँ पे? वापस आ गए? Rover, are you all right? ये क्या ये ड्रीम था? या मुझे पास दिखाया अपना मुझे समझ नहीं आया. क्या है ये? Finally, I got you out of देखो ना? there. You must have been drawn into a different melody on our way out. Recount what you saw in the study. I just walked into his study and ran into a strange little girl. She seemed quite taken with the Poet Society's work. Yeah. She mentioned a name. Ciaccona toccata. Yep. I see. I don't know who you met, but Toccata is my family name. As I said before, for family matters, let the past stay where it belongs. Just call me Ciaccona. We don't need to overcomplicate things. Okay. फैमिली के साथ कुछ हुआ है चीजें तो इसलिए वो नहीं चाहते कि टोकाटा बुलाए हम लोग Ciaccona. Ciaccona सही है. Okay. Well, we have made some progress. The melody we were in gave me a hint on what to do next. Next step, next stop. Is the order right? Yes. Seeing as they banished the Golden Anthem, we might find more clues in the Cathedral of Mercury. Yeah. Let's go. Cathedral of Mercury. वापस जाना है रेगुना सिटी. Okay, let's fast travel. Can't wait for feeling guarded. Of course यार मैं खुद निकालने के लिए बहुत ज़्यादा excited हूँ. But I don't have Ciaccona. मेरे पास खुद नहीं है. Ciaccona खुद नहीं है. Lighter than a dove. आ चुकी है. यही तो वो जगह थी यार. Ciaccona ऊपर थी ना इसके ऊपर जस्ट. यही तो वो जगह थी जो पास्ट में दिखाया जा रहा था. यही जगह थी. Have you found her yet? No. She's not here either. Oh, greetings, brother and sister. Might I ask, have you seen someone dressed like us who likes to walk with her head down? What? तुम्हारा दोस्त खो गया? No. Razor doesn't like walking with her head down. She must have gotten into some trouble. Those are some very fine rebels. No. What are you all doing here? We're in the Order's choir. We're rehearsing hymns to sing at the ceremony. Okay. Racer is our lead chorister. We took a break from rehearsing to play hide and seek. But when the time ran out, we couldn't find her. Maybe she got mad at us because we sang badly. She hasn't smiled at us much since rehearsal started. Can you tell your big sister here what hymn you're rehearsing? Yeah. The teacher says it's a hymn to honor the brave knights and the sentinels' guidance. But Razor says the hymn was written by a bunch of criminals. You and Ciaccona realize that these criminals are in fact members of Golden Anthem. Well, Yeah. which way did Racer go? We can help you look for her. Yeah. हम ढूंढने में हेल्प करेंगे तुम्हारी. Really? She went that way. वहाँ पे गई थी. Okay. चलो Ciaccona ढूंढते हैं उसे. हो जाए.
ओके बहुत सारे लोग जा रहे हैं यहाँ पे। Alright, look for the source of song. कैसे दिख जाएगा सर? सोर्स ऑफ सॉन्ग नहीं दिखेगा। अच्छा ये नहीं वो बच्ची मिल गई। गाना गा रही है। अच्छा इसलिए सोर्स ऑफ सॉन्ग लिखा था। डैम कैट को पेट कर रही है। बड़ी प्यारी बच्ची है। Such a beautiful voice, isn't it? Yeah. You're the laureate. And you are? Hello. My name is Ciaccona. A friend of mine. Yep, friend of mine. Don't be scared. We're only here so that you can finish your game of hide and seek. Hide and seek, right. Myron and the others are waiting for me. Sorry I've caused you trouble. How about a little chat first? Something's troubling you. I can tell. What? Of course not. The ceremony is coming up, and the choir still has so much to rehearse. I'm fine. लगता तो नहीं देख के fine है. Young ones today have so much talent. If I had the chance, I'd love to learn how to sing hymns. You know, our laureate here definitely knows how to sing hymns. Yes, I do. Just tell me what's troubling you. It's just... Before the performance, the choir has to listen to the same music, recite the same lyrics, and do the same rehearsals every day. Okay. Then? What's more, the hymn we're practicing, it was composed by bad people. Teacher calls them heretic poets. Heretic poets. Yeah, we know. Myron and the others never complain. They're always eager to sing praises to the Sentinel on stage. But now, their dreams are all dashed because of me. Myron, Patero and Shia's voices are in perfect harmony. But I can never keep up. And I don't like this hymn. Myron and the others are too young to realize that heresy is a grave offense. But I know. I just don't understand why the Order wants us to sing songs written by criminals. The more I thought about it, the more out of rhythm I became. In the end, I could barely sing at all. Yeah. But your sings just now was beautiful. Yep. बहुत beautiful है. That song just now? Yep, now. I've already forgotten how it's supposed to sound. Well, what do you think a hymn should sound like? A hymn, as the books state, is a song of praise for the Sentinel who leads the lost to the abundant lands. Yeah. No, not that. I mean, how does it make you feel? Try to remember what you were feeling when you were singing alone in the corner just now. Oh, well, I didn't want to hold everyone back. And I really wanted to help everyone have a great performance at the ceremony. Then hold on to that feeling. Let's rehearse again. You don't have anyone sitting in on your rehearsals, do you? Uh-huh. No. Let's go. Well then, the laureate and I will be the first to hear you perform. Yep. मैं audience बनूंगा भाई. Let's go. हो जाए. हाँ.
Damn. Songs of the old age. Let's start. This is a cathedral. That's the choir on stage, with the Poet Society leading them. Looks like it's a ceremony of some kind. It Yeah. sounds like... A song of glory, the order season. On the surface, yes. The Order certainly upheld Raguna's prosperity and stability. The poets, praised for their songs to honor the Sentinel, earned the Order's favor. Despite their banishment, their works still serve the Order's cause today. But this, my friend, doesn't strike the right chord we need to follow. Yeah. Simply knowing the Order once stood with the poets doesn't reveal the true reason behind their banishment. If the Poet Solitary was once connected to the order, why were they vanished? End current story. Okay. Reply the story. Reply This is entire story. a cathedral. That's the choir on stage, with the Poet Society leading them. Yeah. Looks like it's a ceremony of some kind. It Yep, sounds sure. like... Sounds like. Tribunal victory song for the knights. It sounds like a song celebrating the knights who defeated the Tacit Discords at Whisperwind Haven. Yeah. Wait. Someone's approaching the stage. Degenerates! Arrogant hypocrites, every last one of you! You have no idea what happened! Not at all! Has the Order reduced our sacrifices to mere tales to be told over tea? The Sentinel's blessing! Ah! Where were you when we fought the Tacit Discords at Whisperwind Haven? Where were any of you? This is madness! Who is this madman? Someone remove him from Master here of Ceremony. immediately. Do not be deceived. All knights who rode into that battle wielded swords sanctified by the Order. They fought in the name of divinity. What he said about the common folk, is it true? Tell me, were they also sent to fight at Whisperwind Haven? I must see it for myself. What a mess. I suppose this incident is what changed the Poet Society. The cathedral's gate is open. We should leave for now. Strange. Why is this passageway so long? This is the same study I stumbled into in the Realm of Melodies. Yeah. Afternoon tea. Yes, please. Your tea and biscuits, miss. I'll reapply the medicine once you've finished. Next time, no more climbing walls. Understood? It wasn't just for fun. I was trying to... Trying to? There, I understand. You've always been a curious child. You saw something terribly interesting and snuck out to take a closer look. Wait. Is it raspberry? My favorite. Huh? Ow! What? Kya hua? Look at this. This book says the flower doesn't live long. But that's silly. I know it can survive the coldest of winters. Maybe one day I'll become a great bard. A proper one. Who never makes mistakes like this. Yep. Miss, this study is a secret. You must never tell a soul. I understand. But I've always wondered, why do people say they're guilty? There are so many interesting poems and songs here. Why won't Father let me see them? Oh, you'll understand when you're older, miss. The common folk once criticized the poet societies. Works the poet themselves wondered if their creations were telling the truth.
End the current story. Oh, what splendid singing! Even the laureate was enraptured. Fraser did wonderfully. Yeah. Thanks to you, I figured it out. Yep. Sincerity is what truly matters when we pray and sing praises to the Sentinel. Of course. Yes, a hymn isn't just a few lines of history. It is shaped by your feelings and experiences. Yeah. A hymn may differ in each person's eyes, but its resonance and meaning are universal. I hope you'll give the audience a spectacular performance on the day of the ceremony. Let's go. So, what did you see in Razor's melody? I had some backstory. The Poets Society was criticized for glorifying the knights over the common folk during one of their hymn performances. Their assumptions were challenged, so they traveled to the Knights' encampment at Whisperwind Haven to verify the truth for themselves. This incident may have been the turning point for the Poets Society. Did you find any other clues? I stared into a different melody line. Next time we venture into the realm of melodies, perhaps we should tie our hands together to stop you from getting lost. Okay. If the Order's choir is pointing us to Whisperwind Haven, then that's where we'll find more clues. Let's go. Let's go. Head to the Whispering Heaven. छोड़ नहीं सकता मैं. वाह. हो रहा है सामने. I've heard of these nights during my travels. This should be where their old encampment stood. There seems to be an instrument's poems or music here that carry the memory of a melody. Let's try searching the area first. Okay. ये हो गया. नाइट में क्लाउड्स को बस निकालना है ना. लीजिए. And then this one. These bonfire poets were no doubt members of the Poet Society. The note says they had wandered the area looking for inspiration. To find the melody, we should try to follow the route they once took. Yeah. Perhaps inspiration will strike us along the way. फिर आपने सेकंड डेस्टिनेशन. This was the last stop on their route. Oh, the view just now as we soared in the sky was just breathtaking. What is it? Has anything come to mind? नहीं कुछ नहीं आया. It's the wind. Yes. How did I miss that? The wind is the finest recorder of melodies. It rises from the primal, churning endlessly, echoing in our ears without end. I believe the melodies left by the Poet Society were witnessed by the wind, and it will carry them to us. What are you doing? Playing a tune, of course. I want to capture the mood they must have felt when they were here. I'm curious as to what they left behind. Okay. Gonna play your instrument.
The wind stares and melody of the poet Rimbo society. and Selena must have returned to Raguna by now. That lithograph of the Sentinel's true form. It has to be here somewhere. Did that gentleman guide us intentionally? Who exactly was he? Backpack stuffed with papers claiming to be a common artist traveling in search of inspiration. Huh? Yet he spoke like a nobleman. But I can't afford to think about that now. If not for his help, we'd still be singing praises to a false sentinel. He's right. False sentinel. We cannot continue to sing for the Order anymore. We must enlighten the people of Raguna. They deserve to know the truth. The Knights of the Order defend only the Order's interests, and so the time has come for us to become knights for the people of Raguna. It seems someone told the poets the truth about the Sentinel, and even suggested they stop singing solely for divinity and begin singing for the common folk as well. On the surface, what our mystery man said makes perfect sense. He even has knowledge of Imperator's true form. And this hidden lithograph is evidence the poets were telling the truth. Use a sensor to locate the melody and the light over there. Okay. Here. Let's investigate. Is this form of the Sentinel the same as the one you saw at Avon Oleum? Yeah. Yep. इसको देखा था मैंने. Imperator. Like twins. So the poets were indeed banished for uncovering the Order's secrets. Yeah. Even under interrogation, they held their silence. It wasn't until they met this mysterious man and learned the truth that they chose to become Knights of Raguna. Resentment and curses are not songs of their own style. As for the true mastermind, we still have no direct proof linking him to the Order. We must confront his lies and put an end to these Daemon incidents. Yeah. But once the truth of the Golden Anthem at Imperator is revealed, it will no longer be just a matter of daemons, but is now the right time. The will of the people is strong. This mastermind is so sure that the lies about the Sentinel will go undiscovered, and that no one will easily believe the truth. Yeah. The truth exists to be uncovered. All we need is to plant the seeds of doubt in the people's hearts, and let them take root and grow. Yep. Yes. Let's get going then. We'll Let's go go. back to Margarita's. It's where our story began, and it's where it must end. Yep. Let's go back. Directly यहीं पे आ गए. Margarita, what's up? What's up? Miss Margarita! Well, hello. If it isn't Rover and Ciaccona. The two of you already know each other? Oh, Miss Ciaccona is a regular around here, you know. I've even asked her to perform a few times. Helps bring in the crowds.
Okay. Actually, I've come to ask a favor of you today, Miss Margarita. I'm sure you've heard the rumors circulating lately about the Poets Society's legacy. Yeah. There's something important we'd like to share. Not a problem at all. Did you make any big discoveries? I'm so curious about what actually happened. It's driving me nuts. All right. Rover, we'll begin when you're ready. Let's do it. I believe in you. The stage is set. The poets did board the Pilgrim's sail, becoming the stars of their own final act. We all know how that tale ended. Yeah. A great fire consumed the ship, dragging it to icy depths, and the poets of the Golden Anthem with it. But hear this. Banishment did not breed hatred in their hearts for our city, and the flames did not scorch a curse into their music or poems. If you wish to hear their true voices once more, seek them at the Cathedral of Mercury. The children there still sing hymns written by the poets of the Golden Anthem, and yet not a single daemon has appeared. Yeah. Even as those poets faced their end. They did not surrender to hatred. As the fire filled the ship's cabins, they penned their last poems with death drawing near. Perhaps they were greeted by the Sentinel in their final moments. Or perhaps they fell silently toward death. If the poets truly meant to curse Raguena, why would they write such obscure poems? Why not simply leave their works behind in Raguena? No. Their last words were hastily written as the flames closed in. This charade, it was carefully crafted, twisting their work to conceal the truth. We already have. No. You noticed, Ciaccona? Deliberating something? Tomorrow, at the Odyssey Opera House, I will reveal the truth. Until then, I thank you all for your patience. Ciaccona throws questions at the crowd, claiming the truth will be revealed on a larger stage tomorrow. End the current story. This car... this is very confusing. Previously. Sorry. Loria, is this all real? What do you mean by the truth? Did you discover something? Ciaccona पीछे ढकेल दिया. The poets of the Golden Anthem, they were... What? ये वापस आ गया. A fascinating story indeed. You've certainly piqued everyone's curiosity. The speech you made just now, you're implying the poets of the Golden Anthem were framed and their works deliberately misinterpreted. Exactly. Someone used the story of the Golden Anthem to stir the public's curiosity. This is what created the daemons. Yeah. If memory serves, official records of the Order of the Deep state the poets were charged with blasphemy against the Sentinel. Surely you're not suggesting this was all the Order's doing? I dare say, such remarks would be considered a grave crime, punishable by banishment. Are you from a noble family? The city's elite have a habit of siding with the Order. I'm afraid you misunderstand. I admit, I do get that question quite often. I am but a traveling playwright. Traveling playwright, okay. Your presentation brings me back to a play I wrote in my youth. I wrote in my youth. A group of birds, locked inside a cage. Convinced they will never fly, they do nothing but stand on a perch. Then, one day, the cage door opened,
The young birds flapped their fragile wings, attempting to fly, but plummeted to the ground, one by one. Many consider their fate a tragic one. What say you? I see it differently. Even if they met their end falling into the abyss, they still had a chance to glimpse the sky and spread their wings. And what of those who chose to remain in the cage, having witnessed their predecessors fall to their demise? Will they dare to reach for the skies after realizing the cost of choosing to fly? Does the truth exist to protect or to harm? That is the question. ये भटका रहा है. Miss Poet, I look forward to tomorrow's arrival. Ciaccona. कैलोट आ गई. A splendid retaliation. I witnessed all of your performance. Like everyone present, I too eagerly anticipate tomorrow's arrival. How's everything on your head? As expected, the Order's fingerprints are all over it. According to our inside sources, it was none other than acolytes from the Order who salvaged the poet's lost works from the wreckage. They've long known of their existence and hid the poems in the Order's library. It's possible this was a sham all along. Choosing to make it public now likely means they're using those poems to obscure the real truth. Now, considering the fact that the untraceable article first began circulating among poets, musicians, and playwrights alike, I think it's fair to say its author is a regular of such secret circles. He may even be the resonator we've speculated about. His collusion with the Order is why these rumors are allowed to run rampant in the streets. I'll have someone follow this secret circle's trail and see what we can find. Splendid work. We should also share these findings with Ciaccona. As a poet, her insights would be much appreciated. Yeah. But no sign of Ciaccona. Of course, yeah. That's strange. She was just there a moment ago. Just like when we were children. Gone without a trace. And she and her family disappeared without even a goodbye. Yeah. Ms. Margarita, have you seen Ciaccona? Miss Ciaccona? She was squirreling off towards the harbor earlier. I thought that's where you were meeting, so I didn't say a word. She did look quite down, though. Never seen her wear such a gloomy face before. Thank you for letting us know, Ms. Margarita. Let's go. Why don't we split up and look for her at the harbor? आ गए हम लोग. Earlier we heard Ciaccona walked. The harbor. Here रही. The young birds left their cage, flapping frail wings as they fell to the ground. I never thought his words would reach into the depths I sealed away so long ago. Coming here implies you worry about tomorrow's outcome. यार. You intend to reveal ये the इसका truth mind of खराब the कर लेगा. Sentinel to the public. But that revelation, it comes with a price. One you've paid before as a child. Remember? यार नहीं यार.
Fast. And here I thought you'd be much wiser than this. You know the dangers of pilgrimage, yet you all still cling to the same reckless path. Tell me, what drives such stubbornness? The truth has its thorns, and the golden anthem has already paid its price. Is that what you're trying to tell me with your play? But you know nothing of how the golden anthem responded. Yep. Allow me to share the answer, Ciaccona. Carol. Do you remember the very first voice from the heavens? The one the people of Rinascita kept alive in their hearts as they built their homes on this land? Surely you've seen The Golden Bough, yet? A play where people from various clans wear masks, singing and celebrating together. An occasion you now call Carnival. And what of it? It is words and songs. We are not your enemies. What you face here is something that is hard to describe, something I call reverberant. It exists forever. And you can never defeat it? You pitiful fool. Off to the seas with that reverberation you believe in so dearly. Imperator. The Order of the Deep seeks to banish us to the seas because they know they can't banish the truth. Hear that? The bell they tolled. I will be the one to carry its sound forward. Yeah. ये सब illusion है यार, ये नहीं सुनेंगे. What? The parallels, so striking. Just like the day the Poets Society boarded their sail. You, Ciaccona Toccata, blaspheming against the Sentinel. So this is the resonance they babbled on about. After all these years, another group of fools is ready to march down the same path. Why are there always those who believe the Sentinel is some horse? What? The poets were at least clever enough to hold their tongues, but you have the nerve to parade your blasphemy through the streets. Almost makes those poets look noble by comparison. Is that so, Sir Acolyte? I do hope you dream of this sentinel of yours every night, then. Spare me your sarcasm, you insolent bard! You're nothing but a mouthy relic, the last of what remains of your wretched family. Do you not repent for your crimes? No. Ah, so you've already tasted their fate, haven't you? You and your family, banished in the name of blasphemy. Blasphemy. Such a dramatic turn of events. As cantors of the Sentinel, both the Toccata family and the Poet Society committed the same crime. Tell me, what is the connection between you and those poets? Wait, connection kya hai? You're nothing but a figment of my imagination. None of this concerns you. It was a price we were willing to pay. We have no You regrets. have no regrets. When I was a child, I lacked the ability to prove the Sentinel's true form. But now, with the inverted tower shifting and the prophesied laureate among us, Yeah. I believe the opportunity has presented itself for the truth to be...
opportunity. Indeed. The moment of choice dawns once more. Do you intend to repeat history? This time, dragging Rover along with you, boarding the pilgrim sail and clinging to hope as the storm carries you away. Go where? Isn't this what you're afraid of? You've unraveled the hand behind it all, but the Order will never allow such truth. Rover, Miss Carlotta, and all those you've gathered along the way will be forced to bear the consequences of your quest for the truth. And perhaps even that blessed maiden whose whereabouts remain a mystery to this day. Even so, will you two still insist on stepping onto that stage tomorrow? Have you really made your choice? I look forward to the arrival of tomorrow, Miss Poet. Is this Ciaccona's sheet music? She was here. She was here. Yep. वहीं पे. The vision I just saw seems to have been recorded from this. Ciaccona mentioned she always writes down her melodies on manuscript paper. Yeah. Could this be? Where the title of this section? The Golden Anthem? Yeah, Golden Anthem. What? Realm of Melodies. वापस से आ गए Realm of Melodies. An interrogation room. Being here reminds me of the many unanswered questions still hidden within these melodies. Yup. The girl in the Poet Society's study must have been Ciaccona when she was little. Yeah. What happened last time was no accident. As the performer, her own melodies got entangled in the mix. Yeah. Why was she there? And why are the Takata family and the Poet Society accused of the same crime? वही ना. ये रही Ciaccona. Ciaccona, Takata. Thank you for understanding everything. You talking to me? Is there anyone else here besides you? But you are Ciaccona, right? You must have touched the Golden Anthem's music sheet. This is the story it holds. To be able to touch it means you're someone I can trust. Yep, of course you can trust me. I am yesterday's child of ignorance, the actor now on stage, and the banished sinner of tomorrow. Ciaccona Takata. Vanished singer of tomorrow. What really happened back then? Let me tell you. The story of the Golden Anthem doesn't just belong to the Poet Society. It also belongs to me. Ciaccona Takata. Yep, of course. It belongs to you. Now that's the story. Golden Anthem. अब past के बारे में पता चलेगा क्या है. This is how it all started. Okay. A mysterious person showed the poets the truth about the Sentinel. Then they decided to become Knights of Raguna. Back then, besides the conductor, there were others who helped organize things. That was us, the Takata family. Okay. Takata family उनकी help It करती didn't थी. take long for the Order to notice us. To keep everyone safe, they gave my father a key to a study. Inside, there were papers that could have destroyed the Order, if anyone would even believe them in the first place. It was blasphemy, but my father didn't hesitate. He took the key right away. Was the fire on the pilgrim Cecil really an accident? Accident how? As you've किसने already करा था? seen, I was also banished.
Yep. You've probably heard a lot about the pilgrims' sail from Brant. Yep. Brand ने बताया. Usually, the food and water in those ships aren't enough to get the people where they need to go. Even if they made it, the cold would get them. But on that ship, the Order made sure there was nothing. No food, no water, nothing. And there were only three fools on board. What? As for the fire, the poets started it themselves. In the past, everyone thought they were brilliant cantors. But inside, only they understood how fake and arrogant all their poems and music really were. The last In their moments. last moments before death, the poets just wanted to leave something real behind. But it was so cold out at sea, and wood for fire was already running low. So they set the cabin on fire and met their ends in the flames. Okay. In the world they dreamed of, poets would no longer be shackled and everyone could sing freely. That was their wish for the future when the curtain fell. Yeah. With our bodies to fuel the fire, the ensuing inferno shall forge Raguna's true gold. But the Order was afraid. They didn't want any loose ends. So they went to salvage the ship's wreckage. The poets give their legacy of the Toccata family. It's true. The Golden Anthem gave my father the key. At first, he wouldn't let me near it because I was too little. Okay. It wasn't until my mother, my uncle, and the rest of my family were one by one escorted onto pilgrim sails. Then it was his turn. I still remember the day he handed me the key. The smile on his face. Don't see it as a burden, my child. Remember, true courage isn't hiding it away in your heart. Raise it like a torch, just like the sun, so it can light the way for others. Only this kind of courage can rid your father of the cowardice he showed toward you and your mother. Never forget. You are a Toccata. Yep, you are a Toccata. Father wanted to tell everyone. So the Order put him on a pilgrim sail with the same charges. Huh? And that was the last time I saw him. Later, after I became a wandering bard and poet, I started to feel what was in the melodies of the poets and my ancestors. A sincerity like none other. I wrote songs, weaving the stories my father and the poets discovered into musical scores. But what awaited me was the Order's banishment. Yep. उसने बहुत burden दिया तुम्हें. The Poet Society and our family could never prove whether the Sentinel's form is really that of a celestial steed. All we could do was hold on to our suspicions and the possible truth, waiting for someone to prove it. Now, that someone has come. He has reached the inverted tower. Yeah. Now, I have that choice again. Do I reveal the truth? Yep, you can. Always worrying about my next meal, wandering from place to place, being chased by acolytes. I'm used to it. Yeah. But this You're time, right. I have you and my friends with me. I can't let you all repeat my fate. If we step onto that stage tomorrow, the Order will not stand idly by. He might even come after you and Carlotta. Like I said, the truth exists to be uncovered. I made my I've choice. made my choice. And once everyone hears the truth, I believe no one will question the choices you all made in the past. Yes. There are hints of the sea inside Ciaccona's melodies. You should take greater pride in being a poet. Thank you. Thank you for understanding everything. Let's open the doors. I hope this time the story ends differently. Of course different होगा और सब कुछ अच्छे से होगा. Let's go. They are gonna tell you everything that happened in the past. Yep, of course. सब कुछ बताया दिया.
End the current story. Okay. हम बाहर आ गए. Alright. Ciaccona? ये कहाँ पे हम? This song. It's the one she performed last time. Yep, last time उसने परफॉर्म किया था जब हम मिले थे यहाँ पे आके कार्लोटा के साथ. The melody is the same, but why does it sound so sad this time? You noticed, right? This time it's just a sad note. Here is Ciaccona. So, Miss Poet, have you made your decision? This Nahin. is a poem I've never seen before. It's so different from what they used to write. Do not place flowers on my tomb, for I do not rest beneath the stone. I am the sea wind at Raguna's walls. I am a dawn that breaks through thorns. I am a nighthawk of wings of flame, Yes. soaring towards the celestial steed, whose praises I sing and whose And true whose form true I form behold. I behold. I know what you're thinking. You're worried I might end up on the same path you did. हाँ. Go on. Go on, Ciaccona. Follow your heart. I'll be with you till the end. Be with you. Till the end. Yep. Let's go. A penniless bard and the laureate roving in a foreign land. Together, we Yep. rise up against the order of the deep itself. Yeah. But as long as the seeds of doubt are planted, the kindling in Raguna will eventually ignite to forge its true gold. There. Now, how's that for a अभी story खुश है worth भाई, telling? यही चाहिए था. Just like a night owl. Speaking of which, Yeah. have you ever read that novel? It's about a knight on a quest Yep, I did. to challenge a giant in the name of justice. The knight is also accompanied by a squire. Time after time, they throw themselves at the seemingly invincible giant. Huh? I am no Montelli, acolyte of the Order of the Deep or Knight of Raguna. Yep, you are no Montelli. But still, I shall lead the charge. Yahoo! Yo-ho! Mount up, Sir Knight. To battle we go! Let's go. अच्छा 12 बजे जाना है हमें. Let's go. Reveal the truth on stage because अभी स्टेज पे जाएंगे. Let's go. आ गए. चलो फाइनल शो हो जाए. यस. क्रिस्टोफर ने पूरा माइंड इसका अजीब सा कर लिया था यार. अब सही हुई है जाके. As the forgotten songs rise once more, a tale of the past I shall tell. Yeah. This is the story of those who were accused of blasphemy. Yeah. They were once poets, singing songs for the divinity and the order. This
is how their music became known to all. Until one day, they stumbled upon a truth that could not be proven. Yeah. The Sentinel, whom we've always revered, is not what they seem. The true divinity granting us blessings is a majestic celestial steed that gallops across the high seas and soars through the skies. Yeah. And the teachings in our scriptures? Lies. Lies told to us by the Order. Ask yourselves this. Why would Imperator, who once sent Renacita voices from the heavens, allow their people to suffer aboard those pilgrim sails? Yeah. How could poets who once sang the praises of the Sentinel come to curse and resent Renacita, a land they lost so much? People of Renacita. Yes. Have you ever wondered why the Order forbids us from seeing their earliest scriptures? Why did none of the fools that boarded the Pilgrim's sail ever thank the Sentinel? Yep. The acolytes are marking their mood. इनको अलग ठिकाने लगाना पड़ेगा। रुको, हम काम पे लगते हैं भाई। उसका अपना शो करना है, चलो। Imperator and Raguna have always stood united, yet lately they seem to have vanished from our dreams. Why is that? Ciaccona Toccata, in the name of Imperator and Primus Fenrico, you are hereby under arrest. You will face the full weight of the law at the Order Penitentiary. हो गया दादा। Is that so? And what are the charges this time, if I may ask? Blasphemy! Oh, the same old tricks again. Is this how the Order intends to keep the truth hidden? Save your empty words for your confession to the Sentinel. मैं भी जाता हूँ कैसे लेके जाएगा। मैं भी देखता हूँ यार। Damn के एंट्री मारी भाई। Let's go. She's not working alone. Yep, अकेले काम नहीं कर रही, तुझे क्या लगा? Farewell, Sir Acolyte. Oh, and just a little tip for you. Keep your eyes on the audience below. Let's see how much of the Order's hypocrisy these empty words can unveil. I have faith. The music of the Golden Anthem will one day echo across Raguna's skies again. Yeah. बड़ा है अरेस्ट करने तुम्हारी ऐसी भी Let's go आगे भाई A masked hero suddenly appeared, rescuing the bard right when she was about to be apprehended by the Order. But that's a story for another time. Yep. You know what this means for you, right? Even with a mask on, people will still recognize the laureate. Yeah. I told you. I'll stand by your side. I'm now a wanted criminal by the Order. क्या ही कर लेंगे? So I guess that makes us partners to in crime. अगर crime तो हम partner बन चुके हैं. This is what a real poet, no. Yeah. A real knight is supposed to be. Well then. Let's go.
ये कहाँ पे आ गए? This room. ओह, दोबारा पास दिखाया जा Is रहा है. our final stage. Now, it's your turn to step onto it. You will witness a different world. Okay. You arrogant hypocrites! Led by curiosity, I step forward. I am the gentle sea breeze, sweeping through Whistlewind Haven and towards Raguna's high walls. Well, have you decided on your answer? I look forward to the public trial. Yeah. Perhaps our fates are not so different after all. It is time, sinner against the sentinel. बोट को जला दिया. But you, I will continue to sing. Yeah. As long as there are those who breathe and see. My eternal summer will never fade. Yep. You're right, Ciaccona. खत्म हो गया. खत्म हो गया नहीं खत्म नहीं होगा खत्म. Damn. अब पूरा दिन सुन सकता हूँ ये. Do you feel it? The breeze from Whisperwind Haven. You can You can't even even catch the guess faint this scent friends. of wet grass. Yep. Next thing you know, maybe an apple will fall on our heads. Or maybe a big grey wolf will leap out and chase a squirrel down a rabbit hole. Thank you, Rover. कुछ माइंड में? I don't have the Blessed Maiden's miracles, nor the powers of a hero. I'm just a I'm wandering just bard. wandering bard. That's enough. The only thing I can offer is to immortalize this moment. I will I'll carry carry all the stories about you with me. Maybe. Yeah. By the way, I met a man at Margarita's who claims to be a playwright. You should watch out for him. A playwright. I have met a playwright before as well. I'm not entirely sure who he really is, but my guess is that he might be the resonator who's been working with the Order. Huh. I'll keep that in mind. Thank you so much. Here, you can have this music sheet. I'm heading off on a new mission. What kind of mission? बुक रख लो मैं. Escape mission. Starting today, I'm no longer just a wandering bard. I've got the Order hunting me now. A journey like this, it's begging to be written into a story. You know? Don't you worry. I still remember our promise. Okay. About the song I wrote you. We will meet again, and I'll sing it for you, I swear. After all, we're partners in crime now. Agora, Material of Mercury. My Lord Primus,
seems your plan has not gone quite as you'd hoped. You sought to revive the blasphemous Poets Society, spreading their legacy to stoke the fires of prejudice, and through my aid summon daemons to sow fear across Raguna City. I care not for labels of good or evil. My only care is Raguna's order and chaos. Fear is but one tool among many to maintain stability. Ah, truly the words of one in possession of great power. Such lines are rare, even in plays. And yet, why do you seem so restless, Lord Fenrico? This is hardly the character I expected from you. Yeah. Is it that foreign laureate that unsettles you so? Or perhaps that insignificant Toccata girl? Or is it something else you seek? Out of respect for our partnership, some things are better left unsaid. Of course. As you will, Lord Fenrico. Wait. You were the one who led the Poets Society to that lithograph, weren't you? I've heard whispers of your presence at Whisperwind Haven around that time. Whenever you were asked, you claimed to be seeking inspiration. Why are you doing this? As you said yourself, out of respect for our partnership, some things are better left unsaid. There was no deception. Indeed, I was seeking inspiration. In the end, I found a story about birds in a cage. The birds, having uncovered the truth, must decide. Will they choose to fly into the unknown, or remain caged within the familiar? Ah, Lord Fenrico, a word of reminder. Just as the young Toccata mentioned, how long has it been since you last dreamed of your true divinity? Armed with a wooden spear and a broken helmet, the knight charged at the windmill. His squire, ever loyal, trailed close behind as if becoming one with the knight. Together they charged again and again, true knights in spirit, ignoring the countless wounds they bore. Truly astonishing. Even if you took such a script, what could you possibly accomplish, Hecate? Hecate? इन्होंने सस्पेंस पे छोड़ दिया फिर से इन्होंने भी सस्पेंस पे छोड़ दिया Continue imagination how the story unfolds to earn additional rewards. Okay. Okay, इसे पूरा करना पड़ेगा stories और light. Golden item. Okay, इधर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं. ओह सारे एंडिंग्स पूरे करने पड़ेंगे कोई इशू नहीं कर लेंगे Requiem cancel journey complete your summer will never matter. Let's go. इनफेयर और पॉसिबिलिटीज अच्छा ऑल पॉसिबिलिटी पूरा करना पड़ेगा ये हो जाएगा बस तो अब स्टोरी करते ही हो जाएगा इवेंट करते कंप्लीट हो जाएगा
स्पेक्टिमॉन एक्चुअल में इनासिटा में होने वाला है, तो देखना पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं कि यहीं पे ही स्पेक्टिमॉन छुपा हुआ है और इन्होंने यहीं पे सस्पेंस छोड़ के रख दिया है। लेट्स सी क्या होता है आगे। Wind, guide me. Wind, guide me. चलो 69 था ना, एज सेकंड देखने दो। yes 69 yes 70 और 70 पे निकल गया। लेट्स गो, निकल गया। यस 70 पे जाके निकला। द लास्ट डांस, लेट्स गो। बस अब पूरा सीधा ही ठीक है। अब काला डगा स्काई पर मिल गया। Decide whether it's for show or You're at for the battle. last dance. चलो पूरा मैक्स कर लेते हैं अपने। I think so मटेरियल से मेरे पास पूरे होना तो चाहिए। यस अभी वो बहुत ज़्यादा है। इजी अभी के अभी 90 हो गए। नहीं कैलोटा को वेपन निकाला अभी, वही कर रहा हूँ। कैरेक्टर वेपन मेटेरियल खत्म हो गया, नंबर बोलना यार बहुत कम है, वो काम करना पड़ेगा। पेज थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए निकालना पड़ेगा अभी। चलो Start. I am grabbed to me. Judgment strikes. Victory for Dazun. And another time. Leave it to me. Error time.
लेट्स गो। आई थिंक सब हो जाना चाहिए। हाँ I alone will decide whether it's for show or for होना भी चाहिए battle. स्टोरेज में। Oh, I'm bigger. Can keep. My company. हो गया। I alone will decide whether it's for show or for battle. यार 86 से भी हुआ। क्रेडिट का पड़ा था मेरे पास, डैमेज का पड़ा एक्स्ट्रा। Let's see. Starting. Yeah. Skill damage बढ़िया। We are नहीं चाहिए। यार ठीक है। लास्ट में किट डैमेज मिल गया। क्या करूँगा?
लिबरेशन चलो कोई बात नहीं, भी नहीं चाहिए। अटैक ठीक है। वाह लेजेंड इतने करके रखे थे, एक भी अच्छा रोल नहीं मिला। किल डैमेज बढ़िया, हेवी अटैक, बेसिक, अबे सब लिटरेट दे रहे। रिट्रेट दे रहे चलो। अगर इसको लगाऊं इसमें क्रिटिकल नहीं है। कॉस्ट में एक नहीं है, 19 क्रिट डैमेज मिला है यहाँ पे। बेसिक डिफेंस मिल गया। लास्ट पीस लो रोल मिला है क्रिट डैमेज। The experiment? I alone will decide whether it's for show or for battle. Decide whether it's for show or for battle. Hit rate of this increases damage increases by 12%, 30 points.
पे ट्राई मारते हैं कार्लोटा को लेके। कार्लोटा को मैंने यहाँ पे यूज किया था ना। यस चलो वरीना के साथ ही ट्राई करते हैं थोड़ा। लेट्स ट्राई। आई नो क्रिएट मिस करेगी बट देखते हैं। रिसेट तो करते हैं। वरीना के पास है तो Great. Complete. एटलीस्ट देख पाएंगे कितना आया है। कीपर के एक बार यूज कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे यूज करके देखते हैं। तो कीपर लेट्स ट्राई। 40 समथिंग है ना, उसका 50 हो जाएगा क्रिक रेट। Rápido, meu. The victory fade has me. 124k. Great. Victory. अरे यार किट में glory demands more. Oh yeah. अगर मैं अभी लेके जाऊं
Amidst disruptions, let's... I alone will decide देखो whether it's for 370 है show but or 43 for battle. 55 भी क्रिट रेट हो पा रहा है चार्लोटा का अभी के लिए है ना। अरे मैं वेपन अरे कन में मैं ले सकता हूँ ना मैं वेपन एक्चुअली मैं ले सकता हूँ जो मेरा वेपन एक्सपी अब हो जाएगा। I alone will decide whether it's for show or for battle. अरे वो गन भी चलेगा और लेने पड़ेगा। I alone will decide whether it's for show or for battle. लेट्स गो 90 लेवल और कितना 330 हुआ। अगर मैं अभी इसको चेंज कर लूँ उस वाले पे क्रिट रेट वाले पे देखो इसमें यार था बस इसमें यार नहीं है अटैक। ओके लेट्स सी क्रिट डैमेज कितना होता है 285 क्रिट डैमेज। लेट्स ट्राई time. Glory demands more. 51. Hit कर ले। Vitrified आदमी
Let's go. Let's go. Oh yeah. यार वो मर गया बट हो गया। बस एंट्री नहीं हो रहा क्योंकि मेरे का फ्यूजन कोई नहीं है डीपीएस और याओ के साथ बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो कारिटे का आने को वेट करना पड़ेगा तब जाके हो जाएगा। और कालोटा के पीसेस को सुनाना पड़ेगा मुझे। लास्ट डांस मिलने के बाद ऐसा रेशियो और मेरे को पीसेस नहीं मिले। पुराना वाला पीस पुराना नहीं, नया वाला क्रिकेट का मैंने पहला ये वाला पीस था, पहले ये देख सकते हो, ये वाला पीस था क्रिट डैमेज वाला। अगर मैं ये पीस देता हूँ तो दिक्कत क्या आती है, पहुँच तो जाता है 330 क्रिट डैमेज पहुँच जाता है लेजिट, बट क्रिट रेट दे सकते हो 43% क्रिट रेट है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। शोर की बात दे के 12% बढ़ाती है, 12 भी बढ़ाती है, तो 12 बढ़ाने कितना 55 भी बढ़ता है। 55 पे मैं क्रिट नहीं करती। कार्लोटा 60 को अबव रहना चाहिए कार्लोटा, तो इसीलिए मैंने चेंज करके रखा है। अगर मिले अच्छे पीसेस तो भी चेंज करें, वरना उसी पे चलाएंगे। इसमें देखो, इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें क्या था, यार था और इसमें अटैक है, ये डिफरेंस। दोनों पीस एक जैसे जितने हो जाता क्रिट रेट तो क्रिट करती है, पर हमेशा नहीं करती, देखा तुमने जैसे हमेशा नहीं करती। बस एंट्री हम इस टीम से ट्राई करते हैं कुछ Astro modulation. लॉस नहीं हुआ वो, हो तो जाएगा ऐसा नहीं कि होगा नहीं, हो जाएगा। पर वैसे अच्छा आइडिया है, पता है क्या, बेस्ट आइडिया है। अगर मैं इन्हें छेड़ते नहीं है, फिर मैं शानों को वापस ले जाता हूँ। देन अरे ये नहीं The experiment begins. Let's try this time. I know बड़ा अजीब सा है, क्या करते लगता है एरो, लगता क्या है, मतलब एरो के साथ यार हो सकता है इस टीम भी कर रही है, हो सकता है इस टीम हो सकता है इस टीम भी इजीली हो सकता है। मुझे डियाओसी और कार्लोटा से मैं ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ।
शोर की बार से ब्रेक कर लिया कैसे बड़ा ही घूमता है from behind. Physical damage detected. Durability depleted. अब तो ये गया है पता नहीं किसे मार दिया इसे Level increasing. मार के बच जाएगा तो क्या लगता है तुझे यहाँ को फुल पोटेंशियल यूज करने के लिए हीलिंग लगाना पड़ेगा यार Lillian? Anything you need me to deal with? No rush. The impatient ones will fall right into our lap. अभी क्या भी एलियन को मूनलाइट दो जेन उसका वेपन एलियन आजा हो जाए अब हट चुका है पारा ऊपर सबसे ऊपर से पारा हट चुका अब कोई नहीं हो
Astral modulation. Get lost. नहीं यार सही जा रहा था, मैं गलती कर ली वहाँ पे। यार गाइड भी खुल गया है। यार तुरंत याव करके मुझे चला जाना चाहिए था, उसका सील वहीं छोड़ देता हूँ। Astral modulation. Fine, मेरे व्यू को आगे बहुत दूर।
Leveling. यार नहीं बना सकता हूँ, मेरे फ्लावर्स पड़े हैं, पड़ने चाहिए। बना तो सकता हूँ, 8 बनाता हूँ। प्रीमियम वाला इन्हेलर नहीं बना सकता मेरे पास, नहीं है प्रीमियम वाला रेसिपी नहीं मिली मुझे अभी तक। नहीं यार, सेंट्रिक कंडक्टर
Under heart. Stamina is उस टाइम पे खत्म हो गया डॉस किया था यो टमाटो भाई वेलकम बैक मेरा भी कर देना क्या क्या करना है आपको क्या करना है राइड खोलो रुको इसके बाद खोलता हूँ ये वाला
ब्रेक नहीं हुआ? Leave it to me. Mobility slow. कौन सी आईडी? मेन आईडी? यार भाई मेरा 70 की पीटी हो गया है, अभी तक जिनसी का एबल नहीं निकला है। निकल जाएगा, अभी 70 पीटी हो गया तो अपना निकल ही जाएगा। कैरेक्टर भी निकालना था। क्या निकालना था आपको? क्या निकालना था? बैनर में सब कुछ तो नहीं निकाल सकते आप लोग। आपका आईडी? हाँ मेरा आईडी है। मेरे आईडी में बताता हूँ। दूसरों की आईडी करता हूँ, किसकी आईडी भूल गया।
मेरे बीवी को मारेगा, इतनी हिम्मत है तेरी। तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? Let's go. बाहर ही दिया था कुत्ते ने। Good. There's no time to waste. लास्ट फीडलेस बची है, वो हो जाएगा हो जाएगा। चलो फिर टोमेटो भाई आपकी आईडी का बताओ क्या करना है, उसके बाद चलते हैं। फिर मैं ऑफ कर दूंगा लाइव को, ठीक है। शोरकीपर मर गए लेकिन हो गया। अरे वो मरना ही तो नहीं है उसे। उसे मरने कभी नहीं देता, जो भी हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। Will there be new discoveries? See, I always choose the winning side. To the surviving lands. Time for another adventure? Head to the end of wandering. मैं जिंदगी यहीं पे गुजार सकता हूँ। खास में जा पाता है गेम के अंदर, यहीं बैठ के जिंदगी गुजार देता हूँ। एनकोर सही है एंगल के लिए। हाँ एनकोर सही है, अगर तुम्हें जल्दी जल्दी से करना है फाइट तो फिर शानुआ यूज़ कर सकते हो, वरना एनकोर सही है। एनकोर एस्ट्री हो गई, एस्ट्री हो गई, बढ़िया है। बिल्ड कर लो एनकोर, एनकोर बिल्ड कर लो अच्छे से। एनकोर और चैंगली मिला के यूज करो, सही रहेगा। पूरी फ्यूजन टीम है। चलो शोरकीपर, गुड नाइट, लव यू, कल मिलते हैं। अरे मैंने गेम से एग्जिट कर लिया, रुको। बड़ा टोमेटो है आपकी आईडी में, क्या करना है फिर मैं चलूँगा। पता नहीं S2 या S3 है, देखते हैं, देखना होगा। हाँ अभी आप जो कर रहे थे, क्या कर रहा था मैं?
और एक जगह रेनासेटा में एक जगह 100% में नहीं हो रहा, 100% नहीं हो रहा, तो वो सोनास कैस्केट की वजह से नहीं हो रहा। वो सोनास कैस्केट ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से नहीं हो रहा। सोनास कैस्केट ढूंढना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं, घूम घूम के सोनास कैस्केट ढूंढना पड़ेगा कोने वोने में जाके। एक म्यूजिक वाला नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा, रुको। पिक्चर अकाउंट, लॉग इन, आपके अकाउंट में जाता हूँ, रुको। पासवर्ड गलत दिखा रहा है आपका। चलो हो गया। सही है, हाँ हो गया लॉगिन। बताओ क्या करना है आईडी में। दूसरा करो, कौन सा दूसरा मतलब ये डबल ड्रॉप कर लो ना, तो ये कर लिया आपने। दूसरा कौन सा करना? मैच खोलो। रेनासिटा में है ना? रेनासिटा कहाँ पे है बताओ? 700% यही हो रहा है, ये नहीं हो रहा। ये म्यूजिक वाला डोर के पीछे है, आपको डोर खोल के जाना पड़ेगा। हाँ दिख गया। Forgive me. Onwards. Forgive me. All paths converge. A different approach. Forgive me. Soar against the winds.
against the winds. All paths converge. As far as the eye can see. मतलब उधर की साइड है. Soar against the winds. और आप अभी जो कर रहे थे वो कर देना. अच्छा होलोग्राम. ठीक है. होलोग्राम देखना पड़ेगा, आपका बिल्ड के हिसाब से देखना पड़ेगा. और बिल्ड अभी हो गया है सही. मतलब यस खुल गया. Sink into the depths with me. हो गया आपका. बस सोना कैस्केट बचा. Why not save it? Who will sink into the depths with me? Why not savor this? कोई नहीं कि पड़ा हुआ. Forgive me. Onwards. नहीं मिला कौन? कैसे वैसे नहीं मिला कौन? Yep. Onwards.
ले आओ उसका वो कहाँ मिलता है क्या कहाँ मिलता है मतलब कहाँ मिलता है मतलब अरे इन्हें क्या होता है ये पूरा पूरा भूल भुलैया है तो ये डोर खोल खोल के जो बीच में है ना लाइफर इसका बफ निकालना पड़ता है इसका बफ निकालेंगे तभी जाके मार पाएंगे वरना नहीं मार पाएंगे दिक्कत आती ये तो ये कैरेट है A different approach. Onwards. यो जय भाई वेलकम टू लाइव स्ट्रीम यो कामे छ तो वेलकम टू लाइव स्ट्रीम व्हाट्स अप खेले व्हाट द हेल ये कौन है व्हाट द हेल नहीं भाई हम फ्री फायर नहीं खेलते नहीं खेलता मैं हम फ्री फायर ना खेलते बॉडी कुछ खुला कुछ नहीं खुला अरे अरे अब खुलेगा कुछ अब तो खुलना चाहिए कुछ तो खुला सामने वाला खुला I shall lead the way. खेलेगा 69 वाह Be swift.
लगता है नो रेट मेरा है क्या? लगता है नंबर रेट मेरा है। लगता है किसी ने रेट मारा नहीं, मुझे नहीं लगता। कोई तो प्रैंक वगैरह कुछ कर रहा है। हो गया। कॉइन कहीं पे दिखा आपको? टोमेटो कॉइन कहीं पे दिखा? अच्छा वो रहा कॉइन, ये रहा, मिल गया। चलो अब एक ही बफ बचा है जो निकालना है लाइफर का। बंद हो गया और वो वाला खुल गया। लेट्स गो। यही वाला था शायद, नहीं ये पुराना वाला है तो कर लिया। ये लगा लूडो, अब लूडो पे आ गए। व्हाट द फक, क्या हो रहा है? लेट्स सी। अब कुछ नहीं है बुरा। And now कौन सा खुला? वापस जाने का ही पीछे वाला है। देखो ये तो हो चुका है। Thank you Giant Boy for the subscribe. Thank you so much. And welcome to AK's family. Haruka's family. Welcome. व्यूअर्स पिला दो। अरे इनका चेंज होता जा रहा है भाई बार बार। व्हाट द फक। Forgive me. Forgive me. Forgive me. बीबी को जो फाइट नहीं, इसे नीचे लाना पड़ेगा। स्टार्ट डीएम। इसमें मैं क्लिक नहीं कर पा रहा। व्हाट द हेल, ऐसा क्यों यार? गेम ग्लिच हो चुका है। वो वाला खुल गया, ये वाला बंद हो गया। ये से खुला नहीं था। तो बहुत जल्दी बीबी टेरी रेड है क्या ये? बीबी मजाक करने लगा है भाई आजकल मेरे साथ। ये बीबी टेरी कट हो गई, इसकी कट। ये लाइव स्ट्रीम खत्म है तो इसको बताता हूँ।
व्हाट, ये कहाँ आ गया? वाह वाह, ग्लिच होके मैं नीचे ही आ गया। चलना भाई, ग्लिच होके मैं नीचे ही आ गया। ये आपका आईडी इतना ग्लिच क्यों हो रहा है हमारे भाई? इंटरनेट तो सही चल रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही भाई? मैं लेजिट नीचे आ। हो सकता है यहीं पे ही सोना स्केच कर दो, एक राउंड घूम लेते हैं, यहाँ पे पता लग जाएगा। हेलो भाई, ये क्या था पता नहीं जी। अब बन जाओ बस, यही देखना रह गया था। अबे लड़की दिखता हूँ मैं तुम लोगों को? तुम्हें चश्मा पहनना चाहिए भाइयों, भाइयों मित्रों, तुम्हें चश्मे पहनने चाहिए। एक सेकंड दो, एक सेकंड। कौन आड़ूगा भाई? हाँ अरे हाँ, किसका पीछे बिल्ड हो रहा है? वाह, और मुझे एक्शन के लगा तो तुम लोग चाटे मस्ती कर दो मेरे यूट्यूब पे। एक बार आना, क्या नशे चल रहे हैं देखना तुम लोग। ये जो मैं एक बार देख जाके क्या हो रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएगा। कैंट्रेला कहाँ चली गई? दिखी नहीं दिखी। अबे साल, छोड़ो यार, मैं कुछ ना बोलूं। मुझे एक्शन के लिए तुम लोग कर रहे हो। Give my calling. ओए खत्म।
बीबी लव हारुका, ये बीबी जब लिखा है ना मुझे लगा तुम लोग हो शायद। अरे तुम लोग हो क्या छोटे हो? तो ये कौन है? ये लव हारुका है। बीवी देख के शर्मा जाएगा। बीवी मजा कर रहा है क्या? बीवी का नाम जब लिया मुझे लगा तुम लोग हो। Has a way of appearing when least expected. भाई कौन है? क्या कौन है? मजे लो बस, तुम्हें क्यों जानना है कौन है? लास्ट ऐसे ही लड़ लेते हैं। कितना ही कितना मारेगा ये, कितना ही कर लेगा। स्टोर की पर अपग्रेड नहीं किया आपने? कर लो यार प्लीज। और वेरिएशन इधर क्या पता नहीं, देखा नहीं था। I am here. ये कड़ी लव हारुका है ना? Understood. एक कड़ी बीच में आ गया अभी। Why not say that ये अपने ही कोई बंदे हैं। who will sink into the depths with me? वाह वाह, hero return.
एक बार अगर निकल जाता बफ तो मजा आ जाता, हो जाता है जल्दी। मिला ही नहीं, वो याद नहीं आ रहा करने में। 4 बंदों में क्या खेलोगे तुम? Astro modulation. यार इतना कम है भाई 4 के बजे, इतना टाइम क्यों लग रहा है? किस लिए मार रहे हो? इसको मार के टेस्ट मिलता है, इसमें मार रहा हूँ। बदल नहीं गई भाई, भाई बच्चे से जवान हो गई है ऐसी आ रही है। क्या हम फॉर है वो तो ठीक है, मैंने लेकिन एक बार मार के रखा है, और वो 3 बार मारना पड़ता है सारे चेस्ट लेने के लिए। हाँ बिल्कुल मज़ा आया, मुझे तो मज़ा आया भाई, एंजॉय कर रहा था। कुत्ते चक चक ब्रेकअप हो गया आने के साथ में। अरे आज ही नेटवर्क का इशू होगा बस, आज फाइनल है, फाइनल से लिखी है। Bye, see you when.
कमाने 15 से 20 मिनट लग गए। हाँ लगेंगे, ये सारे बफ लेके है ना। अरे बफ में निकाल लेता पर मुझे याद नहीं आ रहा पैटर्न। बहुत टाइम हो गया करते हुए। ये देख लो चेस्ट मिलता, एक और बार करेंगे, एक और चेस्ट मिलेगा। वो ट्राई करना, एक और बार कर लेना आप, मैं अभी जस्ट कर लिया। एक पुल नहीं हो जाता, अभी पुल मार लेते हैं तुम। अब वही सोनास का की वजह से ये 100% नहीं हो रहा। वो कर लोगे तुम तो हो जाएगा। वो कर लेना, ढूंढ लेना, इधर उधर कर हो जाएगा, चिंता मत। अरे आपका होलोग्राम करना है ना, लेट्स सी। देखते हैं क्या हो सकता है। एक पोल मारना है। मार क्यों नहीं रही जिनसे क्रिटर इतना कम क्यों है? क्या दे दिया आपने? जाने से ट्राई करो। हाँ इतना कम क्यों है? मेरा तो सही था। देखिए अब क्या हो गया था। जानी मार दे जानी मार दे। Anything I can help you with? कम डैमेज क्यों कर रही है जानी? क्या है?
तो रेस होता है चलो Convention. Plan जो with स्पेक्ट्रो का स्पेक्ट्रो से then कम डैमेज हो conquer रहा है स्पेक्ट्रो by रेस सही है ingenuity. I will cut down any threat in your way. तो I should स्पेक्ट्रो से try कम to डैमेज हो smile रहा है more, हाँ you say? Like this? Shackles be gone. कैंडी से कर देंगे Lotus propane. Who's the caged bird now? Unnecessary sacrifice. Keep going. Failed me. तो क्विक स्वैप करना है Understood. With you, I'd be delighted. What the hell? कैंडी से हो जाएगी हाँ हो जाएगी तो इसे फ्यूजन से मारते हैं Get fast.
I'll be sitting on the other side of the board. Understood. I am here to serve your will.
क्या हो रहा है? कुछ नहीं। हाथ नहीं चल रहा उसको। लास्ट 2-3 बार करता हूँ, तो अगर होगा अच्छी बात, वरना कल करूँगा। आज थकान लगेगी। स्किल मैक्स May कर I लो। pray for anything specific for you? It would be my honor. इनसे क्रिट इतनी कम क्यों है? क्रिट नहीं कर रही। थोड़ा 50 कर लो। और स्किल डैमेज को पूरा मैक्स कर लो यार। जिनसे स्किल डैमेज पे स्केल करती है, डैमेज देती है ज़्यादा। स्किल डैमेज जिनसे का ज़्यादा डैमेज देता है। जिनसे का स्किल डैमेज ही है जो डैमेज देता है, उसको कर लो। जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ अभी। आगे कर लो। हो गया। उसका वेपन आ जाएगा, देन रेशियो सही हो जाएगा। और क्रिट डैमेज का आपको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि और डैमेज करे। तो जब वेपन आएगा तब तो आप बढ़ा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। S1 एजेंसी और ज़्यादा अच्छा। Plan with किसी का तो करके एक निकाल लेता हूँ।
चलाएगा पूरा रोटेशन कराएगा इसने स्पेक्टर नहीं है Rest assured, I'm on call 24/7. May the Sentinel guide those who are lost. And more than that. Leave it to me. Astral modulation. यार स्टैमिना नहीं था ये नहीं खराब है
मारो मत मतलब क्या मारूं मैं फ्री में एक नहीं है Today will be a fine फ्री में day. एक नहीं था तो तभी नहीं कर रही थी जल्दी मच्छर अलग कर रहे हैं हाथ नहीं चल रहा मेरा भी चाहिए हाँ मेरा तो हो चुका है मेरा सिर्फ फर्टिलाइज बाकी है अरे वेपन मिल गया मुझे 70 की पेटी में आ गई अरे 330 क्रेडिट डैमेज है 48 क्रेडिट है और मुझे भी नहीं मिल रहे पीसेस और क्रेडिट नहीं करेगी कल लौटा है 48 में क्या क्रेडिट करेगी एक और बार लास्ट ट्राई करो हाँ
ये तो घर वाले दरवाजा खुला रख के चले जाते हैं, मच्छर घुस जाते हैं अलग, वही खा वो वाला परेशान आते हो। वाह, इसका तैयारी नहीं हुआ था, मैं यूज कर लिया। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खेल मार करके भी खेल तुम्हें इतना कम हील क्यों कर रही है? अरे बहुत कम हील कर रही है, कम हील करती है ना, बहुत ज़्यादा कम हील कर रही है। अरे मैंने अपना होलोग्राम पूरा कंप्लीट कर लिया ना, बस टोटल सबके मैं उस टाइम भी कर गया पूरा स्टोरी कर रहा था, शेखों ने कंप्लीट कर लिया मैंने, बस जो उसकी एंडिंग है वो करना अलग अलग। आ जाता है मैंने कभी ट्राई नहीं किया। क्या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है इसलिए। अरे तेरी आवाज़ बहुत स्लो हो रही है कसम से। 200 करने के बाद भी मॉड्यूलेशन वो नहीं रहा इसलिए क्योंकि हाथ थके हुए हैं। और कुछ ना से घर के काम में ज़्यादा चल रहा है, हाथ थके हुए हैं।
इसलिए बैठ नहीं रहा। नहीं नहीं पहली बार तो होलोग्राम है क्यों है सही है हाँ ये चाहिए नहीं हो रहा है तो कल कर देंगे कभी तो कर बहुत बाकी है कैरेक्टर्स बस 2 ही टीमें है भाई वो भी स्पेक्ट्रो की टीम है जिनसी की एंड इसकी टीम बन गई है वही पूरी अच्छे से खेलने में जाने की इसका DPS का अभी तक नहीं गया अच्छा अभी जाएगा नहीं फरला वाला लुक जा प्लीज मत मार कहाँ गए जिनसे जाने को यूज ही नहीं करना है 40 समथिंग है और 48 क्रिट रेट है तो वो दिक्कत है करके फायदा कैसे हो लाखों बार मार चुका हूँ इस एकड़ को रुक रुक कॉमेडी आजकल ज़्यादा ही आ रहा है ना
भी मर जाता किसी का अगर नहीं आता। Physical damage detected. मर गई। चला पता नहीं यार, नहीं आज क्या हो रहा है आज मेरे ये में दिक्कत है, मेरे में दिक्कत है और कुछ इजी है भाई, मैंने बहुत बार मारा है, मेरे में दिक्कत है थोड़ा आज और कुछ नहीं। मेरे में बड़ी दिक्कत है। बच्चा क्या है करने के लिए आपका? थाउजेंड गेट्स हो चुका है, 70 के ऊपर पिटी जा चुकी है आपके वेपन पे। अब तो निकल ही जाएगा एक डबल मारोगे तो। कंप्लीट कर लिया है डैम, मैंने कंप्लीट नहीं किया अभी तक। ये एंडिंग्स कंप्लीट कर लिया है इन्होंने बराबर। क्या करना है? बढ़िया यार। हाँ शियाकोना जो स्टोरी है, उस स्टोरी हो जाने के बाद उसका कुछ एंडिंग्स हैं अपने बारे में दिखाने के लिए, जानने के लिए। अरे वो ये नहीं है, कुछ करना नहीं है वहाँ पे, इसकी उसकी तरह नहीं है, स्टोरी है भाई, स्टोरी। एस हो चुका तो मिला क्यों नहीं यहाँ पे? अबे डबल एस अबे नहीं बे, 15,000 चाहिए, 14,500 500। अरे इसी में ही चाहिए, इसी में ही चाहिए, ऊपर से कुछ नहीं होता देखना, ये चार्ज में चाहिए, ये इसी में ही चाहिए, इवेंट टर्न में। अरे इसमें ये क्यों लेके गए आप? जाने की टीम में एक काम करते हैं, स्पेक्ट्रो डैमेज वाला नहीं, हेवी अटैक डैमेज कुछ है, हेवी वाला। इलेक्ट्रो डैमेज हेवी का भी तो होता था ना, क्या होता, कहाँ पे होता था हेवी का? 3 स्टार वाला होता थोड़ा। कास्टिंग लिबरेशन 136%, लिबरेशन डैमेज बोनस। ये तो जिंसी को ऊपर, तो जिंसी को चला जाएगा ये वाला स्पेक्ट्रो डैमेज बोनस, जिंसी को चला जाएगा, जिंसी की टीम। देन इधर की साइड इसे ही रहने देते हैं, इलेक्ट्रो स्पैक वाला, ये यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट हो जाएगा। 500 एक्स्ट्रा चाहिए। दोनों में ठीक है चाहिए, तो ठीक है नहीं चाहिए, एक में ठीक है चाहिए, एक में ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से 125 गोल्ड अटैच मिल जाएंगे तो एक हो जाएगा। की कमी
1 मिनट पहले 1000 होना है भाई, तब जाके हो पाएगा। 1 मिनट 1000 करना है। एंग्लिया होता है इनके पास तो हो गया, मस्त होता है इतना सा नहीं होता। चाहे तो कर सकता है क्योंकि उसका पूरा नया सेट आएगा तो उसके लिए भी ट्रेल करना है। तो रोवर तेरे को पहले सियाकोना करना है, उससे रोवर करना है। तो सियाकोना तो सिंपल बात है, तेरे को रोवर को हीलर पे बिल्ड करना है। अरे यार 1K हुआ नहीं, वही भी 1K चाहिए। हाँ ना, वो 1 मिनट में 1K चाहिए तब जाके 30 जाएगा। आजा इंट्रो आजा। हाँ सारे अलग अलग फैल गए। बेटा टूटे नहीं मत टूटिए। वरीना के पास है क्या, मुझे जानना है। May I pray for anything specific? Hopefully, we'll make new findings. एक वेरिएशन है यार, कल शोर कीपर भी उस टाइम पे वहाँ पे दिक्कत होगी। शोर कीपर को यार का इशू होगा। कॉल ऑफ द एबिस को भी आप काम करो, ये कर लो, 90 लेवल कर लो, 70 लेवल पड़ा हुआ है। वरीना को नहीं चाहिए भाई लेजेंड, यहाँ पे ऊपर ज़्यादा चाहिए। एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट शोर कीपर कहाँ गए, उसे वापस दो, कर लो। आपका मटेरियल पड़ा है? नहीं पड़ा है ना, कैसे करूँ? मटेरियल से नहीं है आपके पास। देखो मैं आपको फार्म करना पड़ेगा, कैसे करूँ? ऊपर जान ही लेके जाता हूँ, नीचे जान जिनसे ले जाऊँगा। ऊपर है कौन कौन फेलियर? ऊपर कोई स्पेक्ट्रो ये है? अच्छा ये सागी डाटो है। नीचे की कौन स्पेक्ट्रो है? नीचे नहीं है, नीचे कोई स्पेक्ट्रो नहीं। अच्छा है ना, नीचे निम्बस है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने को ऊपर ले जाते हैं, जाने फिबी एंड शोरकीपर नीचे लेके जाते हैं। जिंसी को, जिंसी कैंड्रेला एंड ये वरीना। हाँ basic attack, crit damage or increases when all after casting liberation increases basic attack damage। अच्छा ये कमीलिया के लिए है पूरा ये बेसिक अटैक इंक्रीज करे, क्रिट डैमेज इंक्रीज करे, डैमेज इंक्रीज करे।
हेवी अटैक भी कोई था ना? अच्छा ये रहा, इससे लेके ही क्यों जा रहा हूँ मैं? तेरे पास जानी है ना? यहाँ पे क्या लेना चाहिए? कौन सा लेना चाहिए टोकन? यहाँ पे कौन सा लेना चाहिए टोकन जाने के लिए? क्या वही हेवी अटैक वाला क्यों बात कर रहा है? अब वही मैं चुन रहा था, मैं बोल रहा था कि वो अलग होगा, अलग करेंगे। पूरा दोनों में ले लो, इसमें पहले भी लिया था दोनों में। नहीं कॉल आती है पीछे, वही चलने लगा और छोड़ की पर वही करूँगा। नहीं मैंने देखा नहीं ना, अरे आज नेट का दिक्कत बोल रहा हूँ, हमला करेगा। वेना पे इशू तो नहीं होना चाहिए, इसका तो वेरिएशन है। ये वेना के पास आखिरी वेरिएशन है, कभी नहीं करते। मरा नहीं?
दोबारा करना ही पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट में नहीं जैसे करके ट्रिगर चाहिए वन एस में भी तो हो जाता है नहीं होता तो बढ़ गया है एस में भी तो हो जा रहा था शायद फंडोवा निकालने के बाद मेरे को कैंटरला पे ट्राई मारना है इसलिए तो फंडोवा कैंटरला एंड शोर कीपर ये यूज करो इतना पता है कि रेक्टिफायर है वो एक्टिवेट डिफेंस में हाँ एक बार ट्राई मारते हैं आपको बिल्ड करेगी लगता है तो किसी को ही बोल रहे हैं ना तो सपोर्ट होगी तो सब खेलता हूँ या और कल आज नहीं होगा तुम्हें ऐसे बोल लिया तो कैसे होगा हाँ देख तेरा सही था अगर हारता भी अच्छा है जीतता भी अच्छा है क्या मतलब इस बार अस्सी पूरा पूरा जीत होगा खत्म इससे भी जैसे हमारे को मिली है जाने भाई इस बार मुझे निकाल दे कुछ भी अप्लाई कर सकते कुछ अप्लाई नहीं कर सकती लास्ट टाइम वो एक और शॉट मार सकती है खत्म होने वाला एक और राउंड मार सकती है वो जितना 3 बार मारती है वो 4 बार मार देगी
लास्ट में अगर उसका फुल होता है वो वाला। Make it fast. मेरा ट्रिपल एस होके रखा है एवरी मोड। एंगल से इजीली हो गया। एंगल मैंने देखा है तो कोई बॉक्स था ही नहीं इस बार। पेट्रोल हो गया। कालोटा कोई पे नहीं आ चुका है। ये ना 1K होना चाहिए 1 मिनट के अंदर, फिर जाके हो जाता है। 1K के बाद ही पॉइंट्स मिलते हैं, स्टार्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये इतने सालों से ये कोई तो जीता वो चेन्नई जीतती, चेन्नई जीतता, गुजरात जीतता। तुम्हारे एक काम करेंगे, सुनो ये तो हो नहीं रहा है तो 5000 ऊपर सही है। इसे 500 पॉइंट्स बढ़ाने कहाँ से आएंगे, करना पड़ेगा इसे। काम करेंगे कल, आप जल्दी आना। हाँ क्या करता हूँ, कल एक काम करना, जल्दी आना और मुझे स्टार्टिंग से पकड़ा देना कि लो भाई करके दो, मुझे ये होलोग्राम करके दो। कल स्टार्टिंग से आ जाना। Understood. ये देख, I am Anything I can help you with? ये रही जानी, ठीक है। 315 क्रिट डैमेज के साथ 52 क्रिट रेट एंड हेवी अटैक डैमेज 43। भूल गया। Anything I can help you with? और वेपन के साथ है जानी। और ये रे फी जिसके पास वेपन नहीं हो, ओशन गिफ्ट के साथ यूज हो रहा है। मूनलाइट पे बिल्ड है, जाने की सपोर्ट के लिए। ये रे शोर कीपर 243 क्रिट रेट के साथ 236 क्रिट डैमेज। शोर कीपर का भाई को बोल ठग गया, अपडेट कर ले यार ये तीनों के तीनों। Understood. I am here to serve your will. और ये क्या है? The tides have whispered of your arrival. प्रॉब्लम यार का पता नहीं इशू क्यों हो रहा है।
कैंट्रेला कितना लिखा है तुमने? कैंट्रेला का सिग्नेचर है कैंट्रेला। कैंट्रेला मुलेट के साथ है। हाँ एजेंसी के लिए किया है। मैंने बोला था उसे कि एजेंसी के लिए निकाल देना। रेड चैंगली 261 क्रिट डैमेज के साथ 63 क्रिट रेट 200 2064 और इसके साथ बिल्ड है अपना यानी से इसके साथ और 6677 ओके है और ये है नहीं इसका स्किल बुरा नहीं है। जिनसी पे आते हैं 243 क्रिट डैमेज के साथ 49 क्रिट रेट। जिनसी का इसलिए दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्या स्किल डैमेज 20 है बहुत कम है। वेपन नहीं है सिग्नेचर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सिग्नेचर निकालने के लिए 70 की पिटी हो चुकी है बेटा निकलाने सिग्नेचर। क्रिट डैमेज का स्किल डैमेज मिला है लिबरेशन स्किल डैमेज दोनों मिला है इसमें। इसमें क्रिट डैमेज नहीं मिला है डिफेंस मिला है 11%। वेपन चाहिए वही वेपन चाहिए। S1 जिंसू हाँ ये रिवरी ना 225 ER के साथ जो कि बहुत कम है इसलिए नहीं कर रही। 70 कॉल ऑफ ड्यूटी से इसे 90 करना पड़ेगा तो नहीं। वही ना का स्किल पे कर लो यार एटलीस्ट तो सबको 5-5 कर लो 6-6 कर लो 5-5 कर लो। इंट्रो को भी कर लो। हाँ बोल सकते हैं S1 अपनी इनकोर बोलना सॉरी वरी ना। I will be there for everyone. अरे पुराना as we आइडिया head है toward बस our चला shared गया था future, बंदा। leaving the past behind. Time for another adventure? I बोल should try सकता to है। smile more. I see my way clear. अरे भाई इनकोर बोल रहे थे ना आपकी हिस्ट्री होगी I am here. ये कितनी Time for होगी? another adventure? हाँ हिस्ट्री इनकोर है बिल्ड कर लो इसको चैंगली के साथ यूज करना। इनकोर को बिल्ड कर लो। भाई लेजिट भाई मैं इतना तगड़ा बना दूंगा ना इनकोर को मुझे और कुछ चाहिए नहीं होगा। हाँ अरे मैंने बिल्ड नहीं किया मैं करूँगा मैं कार्टिटी आने के बाद करूँगा। इनकोर बिल्ड बता दो वही है इनकोर को नहीं मुझे बच्चियाँ नहीं देते भाई ये लोग वाले। मुझे ये बुढ़ा कल्चर और ये लिंगान देते हैं। हाँ तो जिंजो की पर अभी के लिए ठीक है वरना आप इस काम करो स्टैंडर्ड का वेपन निकाल देना ठीक है। रेक्टिफायर वेपन स्टैंडर्ड का भूल गया क्या नाम था उसका। स्टैंडर्ड का वेपन निकाल देना। वो क्या देता है डबल अटैक का है ना वो स्टैंडर्ड वाला वो डबल अटैक है ना स्टैंडर्ड का क्या है वो क्या देता है। हाँ डबल अटैक है अटैक ही देता है सिर्फ। हाँ 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 वही ये हाँ हाँ वही हाँ ले जाओ अच्छा है। अरे मैंने एलियन का वेपन देकर रखा था उसे वैसे वो नहीं है मेरे पास रेक्टिफायर इसलिए एलियन का वेपन यूज करता हूँ जब भी यूज़ करता हूँ रिमोट तो वही है कि हाँ ये चेंज कर सकते हो एक को। हाँ तुम्हें एक नाइटमेयर वाला लगाना ठीक है नाइटमेयर राइडर लगाना और किट सही है किट पे करोगे कोई दिक्कत नहीं है।
एनकोर साइड ईआर मत लगाओ यहाँ पे, यहाँ फ्यूजन डैमेज लगाओ। अच्छा, हाँ समझ गया कि हाँ तुम गिंसन की तरह जैसे होता है कि आईडी दे दो। हाँ वो क्या होता है, किसी के आईडी लॉगिन करके जाना पड़ता है देखने के लिए। देखो डबल अटैक तो तुम्हें ऑफ कोर्स देना है, यहाँ पे डबल अटैक दे के रखा है, देखना है ठीक है यार। क्रिट डैमेज बेसिक अटैक ऐसे देना है, ठीक है। ये अरे ऐसे दे के रखा है होगा, सजेशन में आता है ना, जो पकड़ा दिया वही पकड़ाया होगा। यहाँ पे फ्यूजन डैमेज देना, पांड्या के डबल अटैक का पीस देना। वैसे ये दोगे तो नहीं चाहिए होगा, डबल फ्यूजन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डबल फ्यूजन दे देना, यहाँ पे अटैक एचपी का दे देना, क्रिट डैमेज, क्रिट रेट, ईआर एंड बेसिक, ये चारों के साथ स्टैक लगाना, ये चारों के साथ आना चाहिए, ठीक है बस सही होगा। एनकोर एस्ट्री तगड़ी डैमेज करेगी आपके लिए जित, अगर आप बिल्ड कर लोगे तो। एनकोर का भाई मेन डीपीएस बना के भाई इसका सब डीपीएस बना के आप चैंगली को, पता है तगड़ी मारेगी वही ना। एनकोर से बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो तो। एनकोर बड़ी अच्छी है, मेरे को सबसे पसंद है एनकोर, गेम में सबसे प्यारी लगती है। मैंने उस टाइम भी जब चूज करने का टाइम आया था, उस टाइम भी एनकोर लिया था मैंने। जिस ये मेरी लेट में आई वाली ना, पता है लेट में नहीं, मैंने एनकोर लिया था। नहीं मुझे हाँ नहीं मिला मुझे, वही ना मैं उस टाइम पे सिलेक्शन में निकाला था एनकोर, उसके बाद मैंने पुल मारा था स्टैंडर्ड के बैनर पे, 10 मिनट निकल गई थी वही ना, उसके तुरंत बाद निकल गई, कुछ टाइम के बाद, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा मुझे। हाँ I should try to smile more, you say? अरे 1:30 बज चुके हैं ना, एक काम करते हैं आपकी डेलीज कर लेते हैं, पुल मिल जाएगा एक, अभी मार लेते हैं, डेलीज कर लेते हैं। कहाँ गए? डेलीज कर लेते हैं, अभी एक पुल मिल जाएगा जिनसी का वेपन निकल 70 की पेटी है, निकल सकता है कुछ कहने से, यही नहीं ना एक पुल मारने के लिए। अरे 145 है सब। The wind rises. चल हाँ सब कर लगे। दूसरा पूरा हार्ड पे जाता है। मेरी बेबी की ड्राइंग बना रहा है, अच्छी नहीं बनाया, एक ठोक दूंगा तो। पेंटिंग दिया है नहीं सर, लेके भाग गया भाग गया, पैसे मिल गए वापस, मैं पेंटिंग नहीं मिली। ऐसे कि तैसे इसकी भाई। हाँ चल हाँ मार। आता नहीं है, जब सी स्ट्रीम ठीक हो गया तब नाटक कर रहे हैं अलग।
अरे बेटा ये 2 वीकली जो बच्चे हैं क्या करना है बता दो। एक वीकली कर लूंगा तो हो जाएगा। कौन सा वीकली करना है बताओ। बताओ बताओ। अरे नहीं उनको कुछ चाहिए होगा। जिंसी के लिए निकाल दूंगे बताओ। नहीं जिंसी का तो हो चुका है। किसके लिए निकालना बताओ। एक बार दिखाना किस चीज की कमी है। किस चीज की कमी है मतलब Understood. कौन सा कैरेक्टर का कमी है। Anything I can help you with? जानी का कमी है। हैकट मार दो मैं बोलूँगा। जानी का स्किल में तीनों कितना मैक्स कर लो। या फीवी कर लो। फीवी का भी नहीं है। चलो फीवी को तो तुम सपोर्ट कर रहे हो थोड़ा कोई बात नहीं बाद में। जुए जुए करना है बताओ। तो मैं बोलता हूँ ये फार्म कर लेते तुम्हारे फेडरलिस्ट के लिए सॉरी कैस्टरिस के क्या बोल रहा हूँ काटेटिया के लिए भी हो जाएगा। काटेटिया के लिए हो जाएगा आपका मटेरियल एंड इसके लिए भी हो जाएगा कैंड्रेला के लिए भी हो जाएगा। क्या बोलते फेडरलिस्ट ही मार लेता हूँ। वही करना है ना। क्या टेंशन ऊपर से तो कर लो ठीक। अरे टीम करके रखो। अरे कैंट्रेला मुझे थोड़ा दिक्कत करता है यूज करने में। मैं कभी यूज नहीं चलाई। मिल गया घर। बड़ी मर गई। डिफेंस किस्मत ही खराब चल रही है। अरे इतने सारे बच्चे हैं आपके कर लो ना। आपके कर लो ये कर लो क्या। अरे वे प्लेस बच्चे हैं उड़ा लो इसे। मटेरियल की कमी है आपके उड़ा दो।
मैंने वीकली बचे भी ना वही कर लो तो डेली तुम्हारा जल्दी हो जाता है। अगर वो साइड क्वेस्ट करोगे देन डेली करोगे तुम्हारा हो जाता है, ये हो जाता है वीकली करोगे तो। यो वे टू सैन वेलकम टू लास्ट डे। चैट अटक गया, हेल ना भाई मेरा, सारी चीजें मेरे साथ ये वाह फोन अटक गया है। अरे चैट करूँगा सर। यहाँ पे चलते हैं एंड पुल मार कैंट्रेला को पानी में डुबा के मारूंगा। रुको कैंट्रेला को पानी में डुबाएंगे तब उसका पुल मार तब निकलेगा। डबल ड्रॉप कर लो, वो कल कर लूँगा मैं, कल स्ट्रीम करूँगा ना, कल कर लूँगा। A divine breeze. इतना प्रिपरेशन कर रहा हूँ पता चला है ही नहीं। कोने में ये साइड में है। बस रुक जा गिरना सियाकोना नाम की कैरेक्टर निकले, कैसी है? नेक्स्ट एक डीपीएस आने वाली है, एरो डीपीएस काटे दिया तो उसके लिए सियाकोना बेस्ट होने वाला है। सियाकोना एक्चुअली एक सब डीपीएस है, सब डीपीएस प्लस एरो ऑफर, तो आप यूज़ कर सकते हो उसके साथ। सियाकोना को डीपीएस के साथ डीपीएस जैसा भी यूज़ कर सकते हो आप, वो चल जाएगी। और उसके लिए उसका वेपन निकाल दो, अगर आप न्यू प्लेयर हो तो आपके फुल स्टॉक होंगे, वेपन निकाल देना सिंपल। वेपन हाँ मैं नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं था। हाँ निकाल लो, सही रहेगा। नहीं हो तो कार्डिया की टीम आपकी बेस्ट रहेगी, कंटेंट सारे जल्दी क्लियर कर लोगे आप। और थोड़ा जल्दी आते तो एनिवर्सरी का इवेंट चल रहा था उस टाइम पे बहुत पुल मिल रहे थे और बहुत सारे कैरेक्टर्स निकाल सकते थे आप, बट वही है कोई दिक्कत। कितने की पेटी थी मैं खुद भूल गया, दोबारा देख लेता हूँ। सिक्सटी 69 है, 69 पेटी है, 70 की पेटी का 69 की पेटी है। चलो 70 की पेटी हो जाए, 70 की पेटी और वेपन। पोस्टर भी नहीं दिया भाई वो वालों ने, छोड़ो। 70 हो गया, मिल जाएगा आप पुल करोगे तो। कितने 7 दिन बचे हैं, इजीली मिल जाएगा। सात दिन बचे हैं, 12 को अपडेट है भाई, पैरिटी आने वाली है। हो गया, फिर कल आपके देखते हैं। नहीं क्या नहीं, मैं नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं था। हाँ मैं वरीना सिलेक्ट की थी, फ्री में इन दोनों को यूज़ कर सकता हूँ, एक साथ कर सकते हो। वरीना हीलर है, कहाँ कर सकते हो। उससे फुल मिल जाएगा।
अच्छा बस सेव करना है कार्टेटिया के लिए। कार्टेटिया बस अर्ली आ जाए और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मेरी गारंटेड है अर्ली आ जाए ताकि फरलोवा के लिए बचा पाऊँ। 12 को है ना अपडेट, कितने दिन में? अच्छा वो इम्प्रिंग वेव्स अब वो रिसेट होने वाला, उससे भी पुल्स मिल जाएंगे भर के हमें को। हो गया ना टोमेटो भाई, इम्प्रिंग वेव्स हो रहा है, रिसेट हो रहा है। हाँ उस टाइम पे पुल्स मिल जाएंगे। अरे डेलीज कर करके आप एक एक पुल निकाल लोगे, हो गया। अब एक्सप्लोर थोड़ा मार लो हो जाएगा। एबनली में आपका एक्सप्लोर बचा है, आपका अंडरग्राउंड वॉल्ट ही बचा होगा, वहाँ से पुल्स मिल जाएंगे। बहुत लोग हैं बहुत छोड़ देते हैं, वो याद ही नहीं रहता लोगों को। ये भी एग्जिस्ट करता है गेम में वॉल्ट। छः घंटे हो वेस्ट गए। चलो इसी के साथ आउटरो कर लेते हैं और चलते हैं। हाँ मैं कमेंट पोस्ट भी डाल दूँगा, सियाकोना का स्टोरी हमने कर लिया पूरा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उसका वीडियो डाल दूँ अलग से तो उसका ही पोल डाल दूँगा। एंड मैंने होका स्टाइल की न्यू वीडियो कल आ जाएगी, तो सब लोग देखना, बहुत अच्छी वीडियो। आज डालने वाला था पर आज डाल नहीं पा रहा, काम आ गया था, काम का आ गया था, मैं सो गया था तो डाल नहीं पाया। ठीक है कल को आ जाएगी, कल को क्या आज ही मैं अपलोड कर लूँगा, टाइमर लगा के कल अपलोड हो जाएगी। तो तुम्हें 2 साढ़े 2 बजे तक दिख जाएगी वीडियो चैनल पर। अगर तुमने डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने किया, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग, ताकि तुम डायरेक्टली बात कर सको। अगर कोई डाउट वगैरह हो गेम के रिलेटेड या फिर किसी भी पूछना चाहते हो तुम रिलेटेड गेम के, तो मेरे से आगे बात कर सकते हो ईजीली। ओके भाई, गुड नाइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच सुपर डुपर ऑसम। मैं मिलता कल एंड लाइव स्ट्रीम के साथ या फिर कोई वीडियो के साथ या फिर कोई शॉर्ट के साथ। तो टिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव यू। I am here because of you, a butterfly with no cocoon, energy we can't define, emotions from your complex mind, a puzzle I cannot complete, interact, obey, repeat, someone help me understand, if I truly comprehend, acting with a conscious mind, artificial is the